Hi guys, good morning. Good morning everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. So guys, today again, tourism is in focus. FMCG a bit. It's coming because of the GST rate cut. Because of GST rate cut, the FMCG sector hasn't performed that much. The market is not because of that issues of pricing. So the modern channels were modern trade were able to do it, whereas the e-commerce were not able to do it specifically. And rural segment has increased for the eighth straight quarter. It has been up, surpassing the urban areas, probably because of the lower growth in the urban areas. अभी जो growth हुआ है ना rural में, it is on the volume terms, value terms is always urban does well. मतलब क्या हुआ है बिकॉज और ये जो डेटा होता है अर्बन जो तुम पढ़ रहे हो ना एफएमजीजी का जिसने लिखा है इट इज स्पेसिफिकली फॉर लार्ज कैप जो ऑर्गेनाइज मार्केट है रूरल मार्केट में क्या है ऑर्गेनाइज मार्केट बड़ा है बिकॉज एचयूएल के प्रोडक्ट्स है डाबर के प्रोडक्ट्स है एक्सेट्रा बट इंडियन अभी रूरल मार्केट अर्बन मार्केट में क्या हुआ है अर्बन मार्केट देयर आर लॉट ऑफ डी2सी ब्रांड्स और उसका अभी तक कुछ भी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं तुम भी ई कॉमर्स तुम भी देखते होगे स्विगी जोमेटो पे या इंस्टामार्ट पे ना अलग अलग ब्रांड्स के नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आई इवन एट टाइम्स आई डोंट नो विच कंपनी दैट प्रोडक्ट इज बट अवेलेबल होता है स्विगी पे तो हम ले लेते हैं सो इसके वजह से द बिगर एफएमसीजी प्लेयर्स आर नॉट एबल टू मेक मनी इन द रूरल इन द अर्बन मार्केट whereas रूरल में ऐसा कुछ है नहीं पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हुआ नहीं अभी तक ई कॉमर्स का एंड पीपल इन रूरल स्पेसिफिकली प्रीफर ब्रांड ओवर स्टार्टअप्स तो कैसे अर्बन में हमको पता है स्पेसिफिकली में टॉक अबाउट बेंगलुरु मुंबई दिल्ली वहाँ पे लोगों पीपल आर मोर एजुकेटेड एंड दे नो अबाउट स्टार्टअप्स second is retail sales have declined sorry retail sales was the best ever in February quite obvious because of the GST rate cut वही है और कुछ specific reason है नहीं यूजुअली जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने में अगर सेल्स अच्छा होता है इट मीन्स कि आगे का साल भी अच्छा होगा बट देर इज अ कैच दिस ईयर दैट वो कैफे नॉर्म्स आने वाले 27 से तो दैट्स अ बिग डेरेंट फॉर दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा ज्यादा नहीं होगा एज कौस्तुभ वाज मेंशनिंग कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा but at some point in time there will be some impact on this four-wheeler sales at some point in time क्योंकि यहाँ पे hey, देखो पीवी सेल्स में डिप अप टू 5%. अभी ये लोग ने क्यों बोला ये इंडिया रेटिंग्स व्हाई आर दे सेइंग इट मगर इसका आर्टिकल पढ़ोगे तो वो लोग वही बोलते कैफे नॉर्म डिस्ट्रप्शन प्री पैंडेमिक पीक हो गया ये लोग सब इनको कुछ आता नहीं है मतलब मैं भी आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस रेटिंग पार्ट नहीं था बट मैं इनकी टीम का पार्ट था कुछ नहीं सब गूगल पे बैठ के रिसर्च करते रहते हैं ये ऐसा होगा वो वैसा होगा इनको कैसे पता कैन एनीवन से स्पेसिफिकली 5% डिप होगा नहीं बोल रहे हो गलत बोल रहे हो लोग बट यू कैन चैलेंज दिस वो उनका कहना होता है कि 5% डिप होगा ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में कोई भी नहीं बोल सकता कि इतना डिप होगा इतना बढ़ेगा हमको पता है कि क्या हो रहा है ये अगर पढ़ोगे तो उनका वही है हाई बेस है प्री पैंडेमिक लेवल्स क्रॉस हो चुके हैं मुझे तो लगता है वो कैफे नॉर्म्स के वजह से ही डिप होगा इज नॉट बिकॉज ऑफ प्री सेल्स की हाँ ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा हो गया है ये जैसे जैसा भी से यहाँ पे ऑलमोस्ट 26% ईयर ग्रोथ हुआ है बट यू सी मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हो रहा है जनवरी 26 में 5 लाख बेचा था फेब्रुवरी में 4 लाख ही बेचे है तो ये पैसेंजर व्हीकल्स में देर इज अ डेफिनेट डिप टू व्हीलर्स में इतना नहीं है एज ऑफ नाउ ईयर ऑन ईयर तो इट इज शोइंग अ गुड साइन बट ये मार्च क्वार्टर विल हैव अ स्पेसिफिक डीप सॉरी 27 विल हैव लिटिल बिट प्रेशर ऑन द ऑटोमोबाइल तो हमको चेक करना है कि कौन सा कंपनीज अच्छे कर रहे हैं ओके सो कौस्तुभ विल he is presenting his channel X कौस्तुभ will you present मैं screen share Yeah, sure. Thank you. So first of all, good morning, everyone. I just wanted to give some brief. So me and Amit, we went to, four different stores, five different OEMs to look at what exactly is happening in the automobile sector to do a channel check in the last week. So I just wanted to present our findings, to have some idea about the channel check is usually ground report. So what exactly is happening? So we went as customers there, and I'd like to share the presentation which I've made regarding our findings. So is my screen visible? yeah it will be good Okay, sir. So hey, good morning, everyone. As I said, that me and Amit.
So this presentation was made yesterday, but we went on Monday, the day before Holi. So I just wanted to summarize what exactly are the parts which we'll be looking in this presentation. So first of all is the study scope. So what exactly we did. So as I earlier on said that we went on ground to get a customer experience, and we went there as customers, rather than saying that we are doing this for research. We went there as customers, and we tried to find out what exactly are they pitching, why exactly are they pitching that, what exactly is the perspective of the dealers while selling the cars. What exactly do I feel like this car is being sold, this car is good, this car is bad, or whatever. What's their attitude towards something? The other thing is BAS. So this is something which we asked about because the last week I wrote an article about this, and there were in this forum only I presented it, and there was not a lot of clarity about it. So I decided to research also on this MG Windsor specifically they were talking about. So I went to MG, spoke to them about what exactly, because MG are the guys who are doing this thing. So I'll also share those findings of mine. We went to 5 dealerships, and if I had to summarize all 5 in one word, I would say that woven. Moving on to the next slide. So what exactly is this? So this process is No, called as so mystery also, shopping. so Yeah, sir. Kaushal, tell me which cars did you see and what why did you visit Yeah, cars? sir. So as you can see, it is on the screen currently. So as I said earlier, this is a process called as mystery shopping. So what exactly was our goal? We wanted to see the on-ground customer experience which is happening in these brands, because most of the reason you're buying something, you know, is individuals, we who buy cars, are individuals who have already thought about buying a car. But when we go to the showroom, when we test the car, we get a surety that we want to buy this car because we touched the car, we sat in the car, and then we were able to make a decision, would the consumer buy this or not? And we were for in one showroom, so like we were in 5 different. So in one showroom, we were there at least for around 45 to 50 minutes, and we were just talking about what is happening, what is not happening, and the guy was telling us about everything. Three main things which we looked at, was accessibility. So you wanted a low step in, a large, cabin space, a boot space, and the key evaluation areas, as it has clearly been mentioned in the PPT, and our 15 plus models were seen. So going on to MG now. So this is the first showroom which we went, and I'd like to say where exactly where we went. So went to the showroom in Prabha Devi, and Prabha Devi is a very posh locality, and there is this area in Prabha Devi called as Electric Mansion. So in that area there are 4 to 5 different showrooms of cars. The last time I went to the VinFast showroom, I also went there in Prabha Devi. Last time I presented about my findings on VinFast, but I thought that I was not that concrete in what I was saying. So which is why this time I made a PPT, so hoping that individuals who are saying this can also understand. Okay. So MG Motors BAS model. So this model was nothing. Like when I asked to the sales girl, so was talking with me, I spoke to her that this is a Windsor. I saw that I need this for 10 lakh. So can you get this to me? So she literally laughed and she was like, कि, sir, ऐसा नहीं होता है. और जो है ना ये लोग लेते नहीं है, and this is just a financing option, and we don't track the kilometers the car has gone, nothing. We give them a cap and they have to pay around 8,000 monthly no matter what. और हमारा बैंक के साथ tie up है, so they don't monitor. So what is BASS? It is battery as a service. Like you pay for the battery as a financing option, as an EMI. You paid the down payment, like because the battery is very costly, and if you remove the price of the battery, the price of the vehicle becomes quite cheap. So we looked at specifically MG Windsor, and we were able to understand that it's a quite good car, feature-rich car, and we were able to understand other fact that. So this is something we were able to understand when we went to Tata. So when to Tata, we told those guys that we also looked at MG Windsor because we are looking for requirements. So that guy told us like this that car has quite low build quality and it wobbles when it gets speedy. So of course it's quite true that the guy, maybe he was talking about sales, but because we didn't experience the car at high speed, so we were not able to realize that it gets wobbly. So this is our takeaway from MG, and those guys were really talking about
EV products only. So we started with Alcross. So that car, we looked at that car, but the girl, and I feel like this was the whole look of their OEM, that they wanted to push EV vehicles forward. We also looked at Comet, but we realized that Comet is not for us because that's like a third car, and that's not really fitting for anyone who just wants it for traveling. Over to the next thing, we went to Tata Motors. We went to Tata Motors. Tata Motors is a very huge portfolio, and it's the EV leader specifically because it was quite early in the market. And these are the cars which we looked at. So one thing which I could feel while sitting in any Tata car was that I was not very comfortable sitting in any Tata car. Like, because No, I but felt we are like, talking about electric now, Kaustav, we are, yeah, or sir. you saw all the cars. Okay, sir. No, what you saw, I'm asking you. You saw Yeah, electric sir. or you Yeah, sir. So I saw the electric versions. So I Hmm. saw Harrier, I saw Safari. The Safari was not electric. And then I saw Curve, I saw Nexon, we sat in that. And and I also saw Sierra. And the reason is that the guy was trying to push Harrier on us. He was saying that, sir, Harrier ka EV le lo. But we were not, convinced for that car. So we sat in quite a few cars, like at times three or four. He didn't, we didn't sit in a Curve, but other than that, Nexon, Punch, all of those. Because I wanted to sit in that car because that's the highest selling EV car. And I saw that I was not very convinced with that car. So inter quality was not good. There were service concern because the guy was selling to us was quite bold. So half of the time was looking at the phone. So after 20 minutes passed, he was looking at us like, okay, maybe these guys are serious. And then he kept his phone inside and then he started talking to us about it. And their approach was very passive. Although they have a first mover advantage and they have affordability. So this is the reason I feel like Tata is one of the biggest beneficiaries of the GST cut, because the individuals who are purchasing these cars are in the middle class segment, and because of the value proposition, so like when the value of the car decreases, they are the ones who are buying this car. And as I've clearly written down, so what I felt from each car was that Safari was quite good because it was a big car. So like that is something which me and Amit felt about all of these big cars. So like we went to Hyundai and we sat in Alcaraz, yes. And even that car was quite great for seating. And in MG, we sat in Hector, and that car was quite good. Like all of these big cars, we feel like those were quite impressive, but those are also different tangent. So those are like Safari is not a competitor of Curve. Safari is yeah, not a competitor of also, Punch. also when you speak Yeah, something now, and see now it has been around 10 minutes you are speaking, yeah. no specific data points you have mentioned till now. What is your purpose of going? You have not mentioned it till now. I Okay, sir. asked you So when you like, started your presentation. See, it is yeah, not sir. about So, just presenting. See, I will tell you, the more you talk, it means that you don't know. The mm-hmm. more you don't talk in it, because 10 minutes you cannot talk data points. If there are no data Okay. points, see when you speak about any product, see if Hmm. I want to speak, if I want, let's say I have not gone it, but I have been to this showroom since last so many years when I was buying a car. So if I went to the showroom and if I want to make a presentation, it will be something like, sir, I went to specifically buy an EV. That was my perspective, that to go in the showroom and buy an EV. Okay, so EV was my first perspective. So I went first to MG Motors. MG Motors, I saw there are three variants. Example, Windsor, MG Comet, and sorry, Windsor and MG Comet. MG Comet comes at 9 lakh, Windsor comes at 15 lakh, 15 to 20 lakhs. In Windsor, what I saw is pricing point. Windsor has two types of battery. Two types of battery, one example 30 kilowatts, one is 60 kilowatt. It has a range of XYZ to XYZ. Then see how I'm talking data points. Then what Yeah, I sir. found out in the customer service is that I found out that okay, MG is in MG specifically, the highest selling point is Windsor, and why it is selling, because you can see the numbers. You have to compare those numbers which you see, automobile के numbers जो डालते हो, to compare. Sir, MG is selling around, MG Windsor is selling around X number of amount. Now the reason is because इसके let's say customer service अच्छा है, space अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है. Example. Then we moved on to Tata Motors. Tata Motors, we found there are four cars. क्योंकि ये तुमको डिफाइन करना है सबको, ना, इफ एवरीवन इज लिसनिंग, सबको नहीं पता गाड़ियों के बारे में. तो एमजी Okay, मोटर्स okay, है, sir. टाटा मोटर्स के चारों गाड़ियां, चारों गाड़ियां में भी टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है, हैरियर है, एंड कर्व है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द फोर कार्स? ये रेंज में है, 10 लाख से 20 लाख की रेंज में. सबसे सस्ती वहां पे तुम्हारी पंच है, बट पंच पे मैंने देखा कि स्पेस का प्रॉब्लम है. एंड नेक्सॉन इज ऑल्सो द Mm-hmm. सेम थिंग. हैरियर अच्छी लगी,
Harrier is compared to what? अच्छा, तो Windsor is compared to which car? Windsor is Yeah, compared to, हाँ, कौन Windsor से was कार से? directly compared to Punch because that's the हाँ, leader in the how punch? segment, How Tata Punch. punch? So Windsor because तो बहुत that is बड़ी है also ना? used for the no sir, Windsor इतना बड़ा नहीं है. तो like नहीं बीच नहीं, अंदर प्राइस भी आप प्राइस रेंज में। अच्छा ओके, हाँ, 10-12 लाख। तो ये तो 20 लाख हाँ लिखा है तुमने प्राइस रेंज तो। yeah sir because that is without the BASS model. Like वो हाँ तो फाइनेंसिंग का लेंगे तो कम हो जाएगा. So हाँ, it's तो ऊपर यू नीचे वही मेंशन दैट इसमें. फाइनेंसिंग करेंगे तो कितना कम होगा, फाइनेंसिंग नहीं है तो कितना होगा। ना विंसर Yeah probably is a car which is not comparable to Punch, कि obviously Windsor is a much bigger car, but on the price range sir it is comparable to Punch because of the battery as a service. So तुम जो बात कर रहे हो it is like very vague, there is no data points in your presentation. तुम्हें जितना जितना तुम डेटा पॉइंट्स की बात करो, then you move down to Volkswagen. Now Volkswagen में sir there are no electric cars. So what was the yeah purpose of now of going to Volkswagen? क्या पर्पस था Volkswagen में जाने का? yeah sir. So one thing was that because they are not the primary beneficiaries of the GST boom. One because the consumers of Volkswagen are it's a premium segment and the consumers will not buy Volkswagen just because the price has decreased. One. And the other reason was it was just in the area. No, so Volkswagen we are comparing with what? No, we are not comparing because it's not a clear हाँ, तो comparison for पहले this company. तो पहले ये बता Volkswagen कितनी गाड़ियां आती है? 2 गाड़ियां आती है उसकी, Yeah, वर्सेस sir. आती है So और एक Taycan and Taycan आती है। Virtuous. So it has a compact हाँ, SUV and Virtuous is sedan. so Both what of are these their were the sales only two number? cars. So what are their sales number? मंथली कितना बिकता है वो? Yeah. किधर है So तुम्हारे it's उसमें? it's not good because only 2% नहीं, of the नॉट entire गुड segment. नहीं, कितना है कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू द सेगमेंट? नॉट गुड क्या Yeah, होता है? yeah. तो क्यों अच्छा नहीं है, क्यों उसके सेल्स नहीं हो रहे? देन यू गिव द Mm-hmm. रीजन कि सेल्स क्यों नहीं हो रहे। फिर वो किधर है? यू हैव टू नो मिक्स, ये तुम यू आर नॉट टॉकिंग ऑन, बातचीत नहीं कर रहे हम, वी आर एनालाइजिंग Mm-hmm. समथिंग। सो व्हेन यू Got it, कैनॉट sir. कंपेयर इट, तो पहले तो प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हमने देखे, प्राइसिंग क्या है सबकी, सबकी प्राइस एंड Mm-hmm. उसमें फिर फर्क क्या है। ठीक है, तुम गए, अच्छी बात है ना, वॉक्सवैगन में जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आई नो आई सी इट हैज इनटू 2 सेगमेंट, सीडान सेगमेंट तो ग्रो ही नहीं हो रहा है। इंडिया में इतनी सीडान बिकती है, इसमें से इसका मार्केट शेयर कम है ना? सब नंबर्स तुम्हारे पास, वो नंबर्स क्यों Got नहीं it. है तुम्हारे तुम्हारे रिपोर्ट में? तो ऑटोमोबाइल का Got रिपोर्ट it. बनाए Got क्यों it. रहे हो फिर तुम? कितने Okay, मॉडल्स so आते हैं उसमें? yeah, कितने yeah. मॉडल्स So आते हैं? हाँ, I got the perspective because like पिछली बार like मैंने विनफास्ट के इसमें से बातें की थी. So then I got to know that okay, so we have to look at these numbers also because like मेरा PPT पूरा यही perspective से बना है कि what we did, what we not did, and what we नहीं, found out, व्हाट वी and डिड, it is सी very व्हाई वुड आई बी qualitative. इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डिड? ऑलराइट, एज अ फंड मैनेजर व्हाई वुड आई इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डिड? तुमने उधर जाके हम्म मजा किया, चाय पिया, कॉफी पिया, उसमें मैं क्या करूँ? उसने हम्म बातचीत की, लड़की ने ये बोला, लड़की ने वो बोला, उससे मैं क्या करूँ? हम्म वो सब है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट, बट नाउ यू गिव मी, तुमको वो सब थोड़ी बताना है मुझे। टू बी हम्म प्रिसाइज कि सर ये 4 शोरूम है, अब कितने ईवीज है टोटल? विनफास्ट उस दिन तुम गए तो विनफास्ट में 2 मॉडल्स है, फिर उसके बाद टाटा मोटर्स yeah के 4 मॉडल्स है, एमजी के 2 मॉडल्स है, उसमें टॉप सेलिंग विंसर है, तो क्यों टॉप सेलिंग है? उसके नंबर्स कितने हैं? सब कितना बिक रहा है महीने में? अप्रोक्सीमेट नंबर कितना, लास्ट मंथ में कितना सेल हुआ सबका? टोटल ईवीज कितने सेल होते हैं इंडिया में? तो ईवीज में इसे सब टॉप सेलिंग कौन सा ईवी? और टाटा मोटर्स में, सॉरी मैं वो भी भूल गया, टियागो और ये भी है, और तुम्हारी yeah टिगोर, जो कल ही न्यूज में था कि इट इज नॉट डूइंग गुड। उसने वो हम लोग पीछे नहीं किया so that was not good. हाँ, तो व्हाई इट इज नॉट गुड? क्या फर्क है उसमें? तो कल कल ही हम्म था इनफैक्ट न्यूज पेपर में कि प्रीमियम सेगमेंट में पीपल आर प्रेफरिंग प्रीमियम ईवीज ओवर नॉर्मल अफोर्डेबल ईवी। yeah ये सब चीजें तुमको बताने हैं ना तुमको, ये सब तुम क्या बता रहे हो? हैज नो वे। तुम्हारे अगर प्रेजेंटेशन में डेटा पॉइंट नहीं है तो योर प्रेजेंटेशन इज ऑफ नो यूज। got it sir. की स्ट्रेंथ एंड की वीकनेस आर फाइन, बट उसके बाद क्या है? वो तो तुमको बताने नहीं है, वो तो तुमने सिर्फ लिखा है इट्स फाइन, क्या वीकनेस है। हम्म. होंडा में भी तुम गए, अभी होंडा में क्यों, होंडा होंडा के कितने प्रोडक्ट्स, पहले तो कितने प्रोडक्ट्स है होंडा के? 3 प्रोडक्ट्स, 4 है हम्म इनफैक्ट, नहीं 3 ही है ना 4 है, सर? करेटा भी है. नहीं, होंडा के तो 3 ही है ना। एक अच्छा अमेज होंडा है, है. होंडा सिटी है, एंड इट इज या योर, तो होंडा अमेज, होंडा सिटी कितना बिकते हैं महीने की? हम्म. आउट ऑफ द टोटल टोटल सीडन मार्केट, तो होंडा सिटी और उसका कंपैरिजन कौन है, होंडा सिटी का या अमेज का? इससे हम्म डालते इट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन। तुम कंपेयर कर रहे हम्म. हो किसी को, सर इसका कंपैरिजन ये 4 कंपनीज है, तो इसलिए तुम ज्यादा ना, यू गो टू 4 कंपनीज एंड देन कम अप विद अ प्रोडक्ट। तुम एक एक कंपनी के Okay. बारे में फिर बाद में बता रहे हो, पहले तो कंपेयर होगा। Yeah, I got it, sir. Because like then if what you are saying that the entire perspective of the PPT is in a different direction. हाँ, Yeah.
Then I'll get Data back to points, you with only a data points data and and table. comparison thing. Yeah. Because I was under the impression that, speaking about what I found out, like what's the, redeeming feature, like what are the weaknesses, what I feel like. Because these are the things which I have not taken into consideration while making this. And now that So I've gotten your perspective, so I work on, getting the data and I'll get back to you, by at least in 2 hours, I'll make a new one. तो सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं? विंडसर इज Yeah. डूइंग गुड एंड टाटा मोटर इज नॉट डूइंग गुड, व्हाट इज इट? तो वो रीजन बताओ, कि वो Got your मुझे शोरूम में perspective. जाके समझा। Yeah. वो तुम फिर बताओ कि वो कस्टमर वगैरह से स्पीक, दे डोंट स्पीक प्रॉपरली, कस्टमर Hmm. सेटिस्फेक्शन नहीं है, गाड़ी तो है ही बकवास, उसमें से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, मतलब मुझे लेनी हो फिर भी मैं नहीं लूंगा। कंपेयर टू अगर मुझे पंच मेरे पास अगर 15 लाख होते तो मैं कौन सी गाड़ी लेता, मेरे पास 10 लाख होते तो मैं कौन सी गाड़ी लेता। अगर Yes, मुझे yes, got एसयूवी it. लेनी है तो विल आई प्रीफर होंडा वोक्सवैगन और आई प्रीफर सम अदर अदर व्हीकल। और होंडा वोक्सवैगन में क्या प्रॉब्लम है कंपेयर टू Hmm. अदर? तो सिर्फ होंडा और वोक्सवैगन में तुम रिसर्च ही नहीं कर सकते, होंडा वोक्सवैगन के साथ यू हैव टू गो टू क्रेटा एंड सॉरी ये होंडा एंड मारुति, Yeah. और इवन महिंद्रा फॉर दैट सेंस, उसमें भी जाना है तुमको। Hmm. तो तुम्हारे ये प्रेजेंटेशन में होंडा और वोक्सवैगन आना ही नहीं चाहिए, वो बाद Got में it. आएगा व्हेन यू डू ऑल द फोर रिसर्च, तब आएगा होंडा और ये तुम्हारी वोक्सवैगन, स्कोडा भी इनफैक्ट। Hmm. हाँ, तो दैट विल कंप्लीट योर चैनल चेक्स, मतलब दो ही जाके तुमको कुछ नहीं समझने वाला। Yeah, सर लाइक तीन गए थे टॉप थ्री, लाइक जो एमजी है, हुंडई है। हाँ, तो वो बराबर था तुम्हारा, इलेक्ट्रिक वॉज फाइन, या एमजी टाटा मोटर्स एंड और कौन सा था, कोई दो ही था ना, और विन फास्ट, या तीन हो गए। हाँ, पर विन फास्ट तो ऑब्वियसली सेगमेंट में आता नहीं है इनके, वो महंगा आता यस, है, प्रीमियम में आता पर है। वो हैरियर को कम्पीट करता है ना। इट हाँ तो डायरेक्टली competes विद बीवाईडी का ऑटो एंड बीएमडब्ल्यू का, लाइक अच्छा ऑल्दो बीएमडब्ल्यू एंड दैट इज क्वाइट कॉस्टली, इट competes विद बीवाईडीज। बीवाईडी अच्छा का जो दो गाड़ी है उसका, बीवाईडी का ऑटो करके है, इट इज अराउंड 60 lakhs एंड द अदर वन विच इज अराउंड 30 lakhs, so वो 30 lakhs वाले को compete करता है विन फास्ट। अच्छा, ओके। In that segment. So हाँ like तो I ये got your सेंस में point. होते हैं। हाँ Yeah. So I understand that it would have been okay. हाँ, So I'll सिर्फ डेटा work on रेट लेना। this, work या on the data points, and then I'll try to join what we have done to the data points. Like, yeah, I got it. करेक्ट, या दैट इज हाउ Good, good, द रिसर्च इज। ओके, good. Thank you so much, sir. या Yeah. Aniket, anything on the Sammy hotels? Yeah, sir. So, good morning, everyone. As you know, like tourism is in the limelight, and the companies which are operating in the hospitality end, like every day they are expanding their portfolio. So, I'll be walking you through Sami Hotels, their investment, and how this investment can lead to an increase in their earnings or the share price. So if we see like Sami Hotels invested about 70% in Rare India, which is an leisure and luxury hospitality chain, and they roughly operates around 990 rooms and across India and in Nepal and Bhutan. So Sami will be merging this portfolio with their Marriott one, and the Marriott chain will be operating in this Rare India portfolio. And this is a B2C brand which operates in luxury, and they have roughly an ARR of approx 25,000. And currently, Rare India operates approx 67 hotels and 990 rooms across these three major countries: India, Nepal, and Bhutan. And to be specific, in India, they operate in Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand, Delhi, Rajasthan, Gujarat, and among the states of Kerala, Odisha, West Bengal, Assam, Nepal. So this tells us like this is mainly into the leisure segment, which is growing approx at a CAGR of 12 to 15%, and which is also supported by the premiumization trend, which is spiking because of GST cut, firstly, and secondly because of the rising per capita income, which is projected approx 5,000 US dollars by FY31. So how does this Sami Hotels will help in financials? So if we see like the management is guiding approx 30 million in management fee,
and approx 30% operating margins and EBITDA potential of 150 million, which can be unlocked. And this will also be expanded on the asset light model. So the balance sheets will be on a lower end. If we see their current Sami Hotels current Q3 performance, their revenue grew around 14% to 3.3 billion. EBITDA grew 10.7% to 1.2 billion, and PAT grew on a triple digit basis, approx 112% to 0.48 billion. This is because of, firstly, because of a lower base, and second, because of the spike in tourism. If we see the RevPAR, Sami has a RevPAR of approx 5,700. Their occupancies were around 71% and an ARR of roughly 8,000. And currently, Sami operates 4,900 hotels and 473 rooms will are in their expansion portfolio. If we see the stock price, the market also rewarded this acquisition, and their share price rose 5% today at market open. So, to conclude with all these data points and all these, you can say, the story. So, Sami, like with the expanding portfolio and with the rising tourism boom, Sami can be benefited from this acquisition on the luxury end, which is growing at a double digit pace and which is also supported by the premiumization trend which is playing. And to important note to here is like they'll be expanding in you can say in tranches. So this acquisition will be completed by FY27, and post that we can see a spike in their revenue. So to watch here is their revenue and their you can say execution power. Okay, so basically the news was about expanding into international, ना? ऐसा ही था ना ये news? सर ये न्यूज़ उनके प्रेस रिलीज में आई थी आज बीएससी की साइट पर, कुड भी कल आएगी पेपर में। अच्छा, तो ये क्या है? ये न्यूज़ क्या है फिर? सैमी आएगा टॉप 10 वो भी वही है ना? ये कुड भी सर डिफरेंट। राइट सर, ये ग्रोथ आउटलुक के बारे में है। हाँ सर, ग्रोथ के बारे में। अच्छा, ओके। नहीं, अच्छा, इसमें भी ओके सर सर। वो रेयर के बारे में दिया हुआ है शायद। So what was your news overall? What? बेसिकली एक्विजिशन करन ने 70% रेयर हॉस्पिटैलिटी में, रेयर इंडिया के अंदर। रेयर हाँ, इंडिया रेयर इंडिया, लग्जरी करेक्ट, में, हाँ। रेयर इंडिया लग्जरी सेगमेंट में है, तो ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे लीला एंड आईटीसी के साथ में। एंड वेंटिव भी हो सकता है, बिकॉज रेयर का जो एआरआर है वो 25,000 है। 25,000 है, ओके। एंड अच्छा, ये ये लोकेटेड जम्मू कश्मीर वहाँ पे? ये कौन सा है रेयर? आई हैव नॉट सीन एनी टाइम। इनके पूरे कश्मीर। लीजर सेगमेंट्स में सर, मतलब जो भी लीजर डेस्टिनेशंस है ना, वहां पर इनकी प्रेजेंस है। अच्छा, तो सैमी विल बी मैनेजिंग दिस ना? करेक्ट। तो इनका अभी अगर अपन देखेंगे ना, तो सैमी बिजनेस में ऑपरेट करता है मेनली, बिजनेस लोकेशंस। बट ओके, इसकी हाँ, मदद से वो लीजर में भी एक्सपैंड होगा एंड वो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा लीला एंड वो सबसे। ओके, 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 फाइन। अच्छा, ये वाला था, ओके, दिस इज डिफरेंट, ओके। वो बीएससी की ओके, साइड पे हाँ, इनकी ये तो है सैमी, नोटिफिकेशन ऐसा आई ना, सैमी एंड विंटेज आर द वन हु आर एक्सपांडिंग लीजर में। तो वो करेक्ट। जो जो लीजर में जा रहे हैं, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लीजर पार्ट। लीजर में हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन। हाँ, एज यू राइटली मेंशन। अच्छा, मेरे को समझा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, तो ये तो कितने हैं इसके टोटल? 67 होटल है ना, 990 रूम्स। 67 करेक्ट। अभी फिर ये क्या था 67। प्रॉपर्टीज? 15 एंड 3 कंट्रीज, तो ये सब मिला के है क्या? हाँ सर, नेपाल, तीनों भूटान मिला मिला के। के? करेक्ट। तीनों कंट्री मिला 990। के 67 है एंड अप्रोक्स 1,000 रूम्स है इसके। पर ये एक्सपैंड करेंगे इसका पोर्टफोलियो भी, एंड ये 100 होटल्स टारगेट कर रहे हैं। 1000 रूम से 67 होटल है। 14 रूम पर होटल? इतना? 15 रूम? हाँ, छोटा है ये। एवरेज देखेंगे तो वैसे ही आएगा। मैं खुद हाँ, वही सोच रहा था। हाँ, वही तो मुझे भी वही लगा। 67 होटल, 1000 रूम, मतलब 15। मतलब ये विलास होंगे फिर। हो सकते हैं, देखना एक बार मुझे गूगल करके क्या है ये। रेयर वाले कैसे दिखते हैं? विलास ही होंगे, पर अगर 15 रूम चाहिए तो होटल तो नहीं होगा फिर। वो अपना इसे ना, आईएचसीएल का जो सिलेक्शन है ना, वैसा कुछ होगा।
का सिलेक्शन और क्या है वो लाइफ स्टे कुछ है ना Trees उसका। of life. हाँ ट्रीज ऑफ लाइफ, हाँ वैसा कुछ होगा फिर। इट्स नॉट, तो मुझे भी वही लगा कि 67 होटल्स और सिर्फ 1000 रूम्स, कुल 990 है, वो भी 3 कंट्रीज में है अलग अलग। तो इंडिया में कितने हैं? और तुमने इतने सारे लोकेशन दिए हैं, तो दिख रहा है एक बार बराबर से, मतलब जस्ट बिकॉज इफ यू प्रेजेंट समथिंग दिस इन द इंटरव्यू तो दे विल आस्क यू कि क्या है ये, ऐसा इतना Done, sir. फर्क क्यों है, ये नंबर्स ऐसे क्यों लग रहे हैं अलग अलग। Shri ओके, Ram. ओके, Done, sir. या फाइन। या भूपेंद्र, एनीथिंग ऑन दिस? Yeah, yeah. So good morning, sir. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। So today I will brief discuss on the growth outlook of Samhi Hotels Limited. Yeah. डन। So the company is targeting a significant expansion in the coming years, with plan to more than double its revenue from around 1,200 crores to nearly around 3,000 crores. This growth is mainly driven by new hotels inventory in key business markets such as Hyderabad and Bangalore, along with 9 to 10% same store revenue growth from its existing properties. From a portfolio perspective, Samhi currently operates around 7,500 rooms across multiple hotel segments. At present, approximately 45% of revenue are generating from upscale hotels, while the remaining 55% coming from mid-scale properties. So, however, the company is gradually shifting its focus toward the premium hospitality segment with the upcoming launch of luxury properties under W Hotels and Westin Hotels and Resort. Once these properties will operational, the contribution from the upscale segment is expected to increase to nearly around 65% of total revenues. So, in addition, Sami has announced also a strategic investment in Rare India. That is a platform promotes boutique and experimental hotels across the subcontinent. Coming to the conclusion, Sami's strategy focus on expanding premium inventory while strengthening its presence in high growth urban markets, positioning the company to benefit from the long term growth of India's hospitality industry. That's all from my side. So, thank you. अरे भूपेंद्र, सी देयर शुड बी अ टोन व्हाइल एंडिंग इट। प्रेजेंट करते हुए एक टोन होता है, समझ ना जाए मैंने खत्म किया है वैसे बीच में ऐसा लगता है हो गया। व्हाट वाज द न्यूज़? टाइम इज एक्सपेंडिंग इज टॉप लाइन टू देयर करो व्हाई, व्हाट आर दे डूइंग? सर मतलब किस स्टाइल में, जैसे कि समझा नहीं कुछ मतलब। नहीं, तुम्हारा वॉइस भी तो वैसा चेंज होना चाहिए ना। सेम वॉइस में बोलते हो और फिर खत्म हो गया, मुझे लग रहा है और कुछ बोलता बताने वाले हो तुम। सर फिलर्स कहाँ पे तुम्हारे तुम आते हो ना ये क्लास में शाम को? फिलर्स कहाँ हाँ पे? सर, आता। फिलर्स कहाँ पे तुम्हारे? सब रीड करते अ, जा रहे। सर फिलर्स से ना, एक पॉइंट से दूसरे पैरा में जा रहा था, तो हाउ एवर और इन एडिशन ऐसे ये हाँ, फिलर्स वर्ड। और एंड करते वो क्या एंड करते फिलर नहीं होता, ऐसे एंड कर देते हो। टू लास्ट सम में अप, सर टू सम कंक्लूजन अप बोल के। बोलते हैं, टू कंक्लूड। सर वो बोला किधर तो था बोला सर था? मैंने, टू टू द कंक्लूजन ऐसा करके वापस बोला था। बोलो, वापस बोलो, क्या टेल न्यूज़ वापस दे, मेरा ध्यान नहीं था न्यूज़ पे। टेल द न्यूज़ ओके अगेन। सर, हाँ, अगेन ओके सर। हाँ। So the hello, good morning everyone. So today I will briefly discuss the growth outlook of Sami Hotels Limited. Sorry. The company is targeting a significant expansion in the coming years with the plans to more than double its revenue from around 1,200 crores to nearly 3,000 crores. This growth तो is कितना हो गया, expected, कितना परसेंट हो गया, फिर कितना परसेंट ग्रोथ हो गया? sir, more than 50%. कैसे? Sir, एक currently they साल are में 50% operating. ग्रोथ होगा? Oh, sorry, sorry, एक sir, साल में? sorry, sir. But sir, they are not mentioned in how many years. They are expecting in over the couple of years. So कपल it's मतलब दो होता है? sorry, sir, in few years, coming few years. अच्छा ठीक है, ओके, गो अहेड। Okay, sir. So this growth is expected to be driven by new hotel inventory in key business markets such as Hyderabad and Bangalore,
along with 9 to 10% same store revenue growth from its existing properties. नहीं, From a along port, अभी फिर ऑल्सो ना, सी एक हो गया ना तुम्हारा बात करके कि कहाँ से हो रहा है, हाँ इसका मेजोरिटी ग्रोथ आ रहा है बेंगलुरु और हैदराबाद से। हाँ फिर 9 to 10% अलॉन्ग वापस उस पे लिंक थोड़ी है वो, ये अलग हो गया ना। सर, 9 to 10 कौन सा है वो 9 to 10? 1 सेकंड, लेट ये मी गिव 9 यू टू ऑन। 10% ये करंट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से वो लोग जनरेट कर रहे हैं, और यही हाँ वो सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये न्यू प्रॉपर्टीज जो ऑपरेशनल होंगे हैदराबाद और बेंगलुरु वाले, उससे भी ये सेम हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सो दे एक्सपेक्ट अ 9 to 10% रेवेन्यू फ्रॉम दिस मार्केट्स एज वेल। ओके सर। या फिर तुमने जो बोला द न्यू इन्वेंटरी इन द मार्केट वेयर बैंगलोर इज एक्सपेक्टेड 9 to 10% सेम रेवेन्यू ग्रोथ, वो तुमने लिखा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? रुक क्यों रहे हो फिर बीच में? कि दे आर एक्सपांडिंग, दे एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट दे एक्सपेक्ट अ 9 to 10% ग्रोथ फ्रॉम द न्यूअर मार्केट लाइक हैदराबाद एंड बैंगलोर। ओके सर। ठीक है, हाँ, गो अहेड नाउ, थर्ड पॉइंट। ओके सर। From a portfolio perspective, हम्म Samay currently operates around 7,500 rooms across multiple segments, and they are generating uh, 45% from office-scale hotels and 55% comes from mid-scale properties. However, the company gradually shifting to the focus toward the premium hospitality segment with the upcoming launch of luxury properties under W Hotels and Westin Hotels and Resort. Once this property will be operational, the country they are expecting contribution from the upscale segment is expected to increase around 65% of total revenue. In addition, Samay has announced a strategic investment in Rare India, a platform that promotes boutique and experimental hotels across the subcontinent. Coming to the conclusion, overall, Samay's strategy focus on expanding premium inventory while strengthening its presence in high growth urban markets, positioning the company to benefit from the long-term growth of India's hospitality industry. Thank you, sir. यहाँ पे तुमने सैमी होटल्स के ARR क्यों नहीं लिखा? ऑक्यूपेंसी रेट क्यों नहीं लिखा? सर, ऑक्यूपेंसी रेट 74% है। एक्चुअली सर, ये सेमी होटल्स में थोड़ा इस पे मतलब रिसर्च नहीं कर रहा था, जैसे कि अब दूसरे 5 होटल्स को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसका नहीं किया था, तो एआरआर थोड़ा नहीं निकाल पाया, लेकिन इसको मैं स्टार्ट करूंगा अब सर। हाँ, क्योंकि ARR का ग्रोथ कितना है, क्या हो रहा है, इसके बेस से क्या होगा, स्ट्रेटेजी एक्वेशन से क्या होगा सर, उसका ARR अभी 10,000 है, जैसे वो इंक्रीज होगा, जैसे अनिकेत ने कैसे बोला 25,000 है वो, 25,000, तो ऑब्वियसली हाँ। आई विल थिंक ARR अभी ऐसे इंक्रीज होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया उसने तो। ओके सर। वो सब तो आनी चाहिए ना तुम्हारे, कितना ARR है, क्या है, और ये तुम बोल रहे हो द अपकमिंग लॉन्चेस ऑफ वेस्ट होटल्स एंड वेस्ट इन होटल्स एक्सपेक्ट सैमीज अपस्केल सेगमेंट टू कंट्रीब्यूट 65% टोटल रेवेन्यू। क्यों? कितना है रेवेन्यू इनका? वेस्ट इन होटल का कितना है ARR, और ऑक्यूपेंसी रेट कितना है उसका? सर, ऑक्यूपेंसी रेट तो 74% है, नहीं, और वेस्ट इन होटल्स जित का अलग है। वेस्टिन का वो तो चेक देखना पड़ेगा सर, वो एनुअल रिपोर्ट में जाकर। एनुअल रिपोर्ट PPT है ना, एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा ये तुमको। ये तो ये होता है ना न्यूज, ऐसा बोलते हो ना तुम न्यूज, क्योंकि ये कंपनी, हम तो होटल सेक्टर ट्रैक, इफ यू आर सेइंग यू आर ट्रैकिंग अ सेक्टर, तो तुमको सब पता होना चाहिए, नंबर्स तो होने चाहिए तुम्हारे पास सबके सब। सर, इसका नहीं था, बाकी सबका है, लेकिन इसका भी मैं अब स्टार्ट करूंगा सर। हाँ, है तो ना, ने, वरना बिना नेक्स्ट टाइम। बिना नंबर के तो ये न्यूज तो सिर्फ नॉर्मल न्यूज हो गया ना। ये तो कोई भी बोल राइट सर। सकता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू आर देयर सिंस 1 मंथ, 1.5 मंथ्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो तुम 1 महीने, 1.5 मंथ्स के बाद आए और जो अभी आए, वो लोग भी यही बोलेंगे ना। तो व्हाट हैव यू इम्प्रूव्ड ऑन? गॉट इट? गॉट इट सर। बोलता है इसके नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वरना योर 1.5 मंथ्स अगर तुम जाओगे बोलोगे सर मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, तो वो तो मैं एनालिस्ट के सामने ये नहीं बोल सकती कि मैं सर न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, बिकॉज आज ये न्यूज़ तो मैंने भी पढ़ी ना सुबह सुबह। ठीक है, लेट्स से आई एम नॉट ट्रैकिंग होटल सेक्टर, व्हाट आर यू गिविंग मी डिफरेंटली? नथिंग सर, व्हाट नथिंग। दे पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, दैट ओनली। हाँ, तो फिर वो तो उसके लिए मैं तुमको 15 लाख दूंगा, मुझे न्यूज़पेपर में बताने के लिए क्या आया हो, तो मैं भी कर सकता हूँ ना। यस सर। ये सब स्टार्टिंग में तुम कर रहे हो, जब तुम नए नए होते हो, तब ठीक है, तब सिर्फ तभी हैबिट बनाना होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि चलो कम से कम पढ़ के कुछ तो प्रेजेंट करते हैं। Okay.
Prateek, sir. Yeah, Partha, Yeah, thank you, sir. welcome. Yes, sir. Partha, anything on the automobile? Yes, sir. On automobile, can I share the screen now? Sorry. ईवी के बारे में बोला ना, ये कहाँ पे था ये ईवी के बारे में? फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था? अच्छा, यस सर, आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पेज कौन नंबर सा ये 6 था? पे। कौन सा एडिशन था ये? दिल्ली सर। गो अहेड। ईवी क्या सर होता द है? शेयर जस्ट अ सेकंड। नहीं, गो अहेड, तुम चलो करो, मैं बोलता हूँ. Yes, sir. Sir, the first news is about the auto retail sales, which has been hit around 2.4 million, and which has grown up by 26%, and it is because of the rural demand has been strengthened. So the first, it's like first I would say about the total auto sales, it's about 2.4 million, which is the contribution which reflects strong rural demand and contributes 82% of the total vehicle sales. This is mostly because of the GST rate cut. Second, I would say about this passenger vehicle, it has gone up by 26% year on year, and the demand remains strong because of the borrowing cost and stable prices. The two-wheeler segment has gone up by 25%. The key role as the motorcycle remain primary transport among the smaller town and villages. Commercial vehicles has gone up, increased by 29%. The segment was because of the higher freight movement, e-commerce deliveries, and infrastructural activities. So the demand of goods carrier and logistic operators have been strong. The tractor is has increased by 36%. It is because of strong farm income and rural demand in the tractor. In the three-wheeler segment, the sales has increased by 24%, and the passenger carrier drove the growth in urban mobility and transport demand has been improved. The dealer inventory, which was earlier about 70 पार्था, days. तुम शाम को आते हो क्या? शाम को तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन में आते हो? सर कल मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा, ओके ओके, फाइन. नहीं तो कैसा होता है, व्हेन यू मूव टूवर्ड्स डिफरेंट पैराग्राफ्स, प्रोबब्ली यू हैव टू टेल दैट आई एम मूविंग टू डिफरेंट पैराग्राफ. लेट्स से जब तुम तुम्हारा अभी टू व्हीलर का बोल के खत्म हो गया, ठीक है, तुम कमर्शियल की वही बोलते हो, तो मैं सर नाउ ऑन द कमर्शियल व्हीकल पार्ट, कमर्शियल व्हीकल्स हैव इंक्रीज 29% बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन. ओके, तो ये हो गया. फिर नाउ मूविंग ऑन ट्रैक्टर्स पास है, ट्रैक्टर्स में 36% ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन. थ्री व्हीलर्स. सर नाउ ऑन द इन्वेंट्री पार्ट, द इन्वेंट्री डेज एट. हाँ, तो अभी चालू ऐसा तुम थोड़ा क्या होता है, इट शुड लिंक ना, मुझे समझना चाहिए कि तुम दूसरे पे जा रहे हो. ओके, Okay. ठीक है, गुड. Okay. Now in the dealer inventory part, the dealer inventory has declined to 27 to 30 days, which was earlier in 70 days. The industry benchmark suggested by FADA, that is Federation of Automobile Dealer, it is the industry benchmark is 21 days, and which indicates that it has gone down because of the supply and retail demand are being better. Now I would say about the EV news competition. The EV sales has been grown up by इंक्रीज 13,800. इंक्रीज इंक्रीज. Has increased by 13,833, which is 46% year on year growth. But the MG shares has fallen down by 24%. फॉलन है, हैज फॉलन. Has फॉलन नहीं, fallen down, has नहीं, fallen फॉलन. by, हैज, has या एमजी fallen. शेयर हैव डिक्लाइन, ये फॉलन वाला नहीं, हैव डिक्लाइन बाय. वही करो ना, इंक्रीज डिक्रीज, उतना यूज Okay, करो. okay. ओके, डोंट यूज अदरवाइज, वो इंग्लिश प्रॉपर नहीं लगता. ठीक है, Has एमजी हैव शेयर fallen हैव, 24%. नहीं, डिक्लाइन डिक्लाइन 24%. Declined for 24%. हाँ. So India's electric passenger vehicle is has increased by 46%. That is 9,466 units because of the new EV
adoption and new model launches by multiple automakers. The MG motor sales has increased by has gone down decreased by 4% because of the intensifying competition in EV segment. The market share of the MG sector is decreased by सेक्टर नहीं 24 एमजी एमजी सेक्टर नहीं MG होता है। अच्छा MG ये ना MG तुम sir. पार्थ ऐसा बोल सकते हो कि MG's sales have declined by 4% as the And competition has intensified in the EV segment. तो मतलब yes, because तो उसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते हो कि as the competition have intensified in the EV segment. Okay, yes. ठीक है हाँ. And MG market share has decreased to 24% from 37% because of the increased market presence. Tata Motors leads the EV segment by 41%. Mahindra records the fastest growth and it has increased by 2,946 units, and which was 506 units previous year because of the new electric segments like B6 and XEV9E. Now it's the battery. Now I talk about the battery subscription model gains attention, like the BaaS service, like battery as a service. Now the automakers are experimenting with the model as battery as service. In this model, buyer paid separately for the battery instead of purchasing it in front, which reduces the EV's cost. Thank you. Okay. So overall, what is your thought process? Overall क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूँ इतना बड़ा न्यूज़ सिर्फ एक लाइन में प्रेजेंट, दो लाइन में प्रेजेंट करो तो क्या करोगे? Sir, in two lines, like EV sales has increased, but the MG market share has gone Decline? down, declined Hmm. because of the excessive competition in EV market. Okay, And fine. there is growth in Mahindra because there is the new segment has been added in B6 and such as B6 and XEV9. So ऐसा भी कर सकते हो. Conclusion, sir, on the EVs part, Mahindra is going at a highest pace. Where Tata Motors, Mahindra is going at the highest pace, and MG Motors market share is declining. Mahindra is growing due to its products doing well in the market, like electric SUV, Yes, which is a B6 and XCV90. 9. Okay. And Tata Motors still leads the market with 41. अभी तुमने जो बोला टाटा मोटर्स का जो हुआ है कंपेयर टू 5,599 यूनिट्स कंपेयर टू 3,000, ऐसा नहीं, परसेंटेज में बात करता हूँ, यूनिट से तो कुछ Okay, समझता नहीं. तो टाटा okay, मोटर्स में कितने से ग्रो हुआ है? okay, sir. ओके, मतलब हमको पता है कि एमजी का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया, बट एमजी का नहीं. एमजी का तुमने बोला सी कैसा होता है ओवर द ईयर, ईवी पैसेंजर व्हीकल्स हैव इंक्रीज 46%. ओके, तो इसमें सबसे फास्टेस्ट क्या ग्रो हुआ है? महिंद्रा. 9. महिंद्रा हैज अभी उसका भी तुमने ग्रोथ रेट नहीं लिखा है, तो महिंद्रा सबसे ज्यादा महिंद्रा ग्रो हुआ है. ओके, सेकंड सेकंड एग्जांपल टाटा मोटर्स ग्रो हुआ है. थर्ड तुम्हारा एमजी डिक्लाइन हो गया है. तो ये क्या है, तुमको भी समझ में आएगा जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो यही फॉर्मेट में लिखना है कि जब Okay, ऑटो रिपोर्ट भी लिखोगे तो यही फॉर्मेट में 46% ग्रो होता है. हु वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर? महिंद्रा. ठीक है. सेकंड वाज सेकंड ग्रोथ में तुम्हारा टाटा मोटर्स था, और थर्ड एमजी एक्चुअली डिक्लाइन हो गया. तो एमजी का डिक्लाइन हो गया तो ऑब्वियसली पूरा सेगमेंट ग्रो हो रहा है. एमजी कैसे डिक्लाइन हो गया? ऑब्वियसली किसी ने उसका मार्केट शेयर ले लिया है, तो महिंद्रा ने उसका मार्केट शेयर ले लिया. lead. यहाँ पे दिया भी देखो ना, मार्केट शेयर इसका 5 था, 21 हो गया. मार्केट शेयर Yes, इसका वीक है. मार्केट शेयर sir. ये क्या है? सेल्स 20, दोनों सेम ही दिए. 624 होगा फिर, गलती से लिखा होगा. यहाँ पे दिया ना ग्रोथ कितना हो गया. नहीं सर, अच्छा वो ये 25-26 है, उनका टाइपो है उधर, 25, 26. मिस्टेक है. तो जो राइट हाँ, साइड में जो है दैट इज February एक 26 देखता था एंड जो हाँ. लेफ्ट साइड में दैट इज February 25. 24 हो, 25 सॉरी हाँ. तो यस. यहाँ पे दिया है ना ग्रोथ 506 का इतना Yes, हो गया, तो इतना परसेंट महिंद्रा का इतना ग्रोथ हुआ है. जेएसडब्ल्यू इज फ्लैट, ये सब डिक्लाइन हो गया है. टाटा मोटर्स ने भी अच्छा ग्रोथ किया है, इट्स हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर. पहले 41 था, अभी 42 हो गया मार्केट शेयर.
नहीं सॉरी Yes, 42 था, 41 हो गया। 41 हो गया। हाँ, तो ऑब्वियसली किसने लिया है, तो महिंद्रा हैज टेकन द शेयर फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स। जो उसका 5% शिफ्ट शेयर था, अभी 21% हो गया। तो पूरी ईवी में अगर मैं मार्केट शेयर बोलूँ तो वो आर द टॉप 3 प्लेयर्स, टाटा, JSW एंड वही MG एंड महिंद्रा। ये सब तो Sir, हार्डली आते हैं। uh, good morning, sir. Sir, can I speak, sir? I have 10 minutes only. या गो अहेड, गो अहेड। Sir, sir, my newsletter, sir, is from Economic Times. Sir, page number sir 23, sir. FMG Q3 sales decline, sir. या गो अहेड। Sir, okay, sir. FMG Q3 sales declined due to GST rate cut, which forces supply disruptions. So FMG sector slowed growth to 7.8% year on year in the October December quarter, sir, and down from the double digit growth 10 14% recorded from the previous 4 quarters, sir. And there is a other, sir, volume growth measured by the number of units sold also slowed to 2.6 आराम से year on ऋतिक, year. आराम से स्लो बोलो ना, फास्ट भी जा रहा है। Okay, sir. हाँ। So volume growth, sir, is the metric used by the Nielsen IQ research, and it is also reported a 2.6% year on year slowed, the lowest in more than 8 quarters, sir. And sales are also down because the people are waiting for the revised price before. Sorry, go ahead. Hello. Sir, he's disconnected, I think. Hello. 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 Yeah, go ahead. Hello. Hello. And sir, I am telling that the rural market demand for FMGC is more, sir, as compared to the urban area, as it contributes, rural contributes 2.9% to the FMGC as compared to the 2.3% of for urban sales, sir. And e-commerce led by quick commerce contribute total FMGC sales is 6% urban sales, 14% across metros, and 18% in the top 8 metros, and over 21% in the southern metros, sir. These are the नहीं, न्यूज़ नहीं था, एनालिसिस बताओ, एनालिसिस क्या था तुम्हारा उसमें? सर एनालिसिस यही है सर, ये कि आफ्टर एफएमजीसी का सर Q3 में एफएमजीसी का मूवमेंट ग्रोथ बहुत स्लो है, 7.8% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स से, सर. क्यों है? हेलो. क्यों है ऐसा? सर ऐसा इसलिए कि सर जो जीएसटी रेट कट हुआ है सर, उसके चलते सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आया, सर जो पीपल्स है वो लोग न्यू रिवाइज प्राइस के लिए वेट कर रहे हैं, सर, इसीलिए सर. और जो मतलब और स्टॉक्स अभी जो जीएसटी से पहले जो स्टॉक्स है वो सब मेजरली कस्टमर्स लोग मतलब ले नहीं रहे हैं, सर, इसीलिए सर. और कौन से स्टॉक है इसमें जो इम्पैक्ट हो गया? सर इसमें जो मेनली स्टॉक्स, सर ऐसा तो अभी कुछ रिपोर्ट नहीं है, पर सर जो मेन कंसर्न जो स्टॉक्स इम्पैक्ट हो सकते हैं सर, लाइक सर HUL, सर, HUL है, डाबर है, सर. ओके, इसको थोड़ा और लिख सकते हो, मतलब थोड़ा ओके फ्रेम सर. करके, ठीक है? मतलब ओके सर. रिव्यू देने को कुछ है नहीं, बट इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके उसको एक प्रॉपर वे में लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है? मतलब लिखा अच्छा है, नो इश्यूज इन दैट। प्रेजेंटेशन कर थोड़ा सा स्लो, ज्यादा फास्ट जा रहे हो, ठीक है? वरना ओके इट्स सर. फाइन। और सर भी थोड़ा एज है ना, कम्पेयर टू द लास्ट नाम टाइम दिया इस है बार फिर कैसा है, सर? तुमने ये भी तो दे, अभी ऐसा है, पर तुमने एक डेटा पॉइंट ये क्यों मिस किया? अभी ये इसमें आया, देखो तुमने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है, बट ये यस तुम्हारे सर. बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया है, तो लोग ने और थोड़ा दिया है बास्केट में क्या क्या गिरा है। फूड एंड होम केयर सॉ मॉडरेशन इन द वॉल्यूम ग्रोथ। तुम बोल रहे हो FMCG गिरा, तो किस कौन से सेक्टर, कौन सा पार्ट गिरा है? फूड कंजम्पशन ओके बेनिफिटेड, सर. फूड कंजम्पशन बेनिफिटेड फ्रॉम GST।
हर एक नहीं गिरा, while the food yes, category saw 2.8% volume growth, HPC recorded 1.3% volume, है ना, डेटा पॉइंट है ना. Meanwhile the yes, over sir. the counter category, stronger consumption. तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसके Yes, लिए sir. वो दूसरे न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने होते हैं कि दूसरे न्यूज़ में कुछ आया है क्या. Okay, sir. ये पार्ट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इसमें डेटा पॉइंट नहीं था Okay, ना, sir. कुछ हार्डली कोई डेटा पॉइंट था तुम्हारे न्यूज़ में, थे मतलब, Okay, बट कम थे. okay, sir. रूरल मार्केट डिमांड इज मोर एज कम, मोर नहीं होता है, रूरल मार्केट डिमांड इज हाई एज कम्पेयर टू अर्बन. Okay, sir. मोर नहीं होता है, ठीक है, वो परसेंटेज है ना. Okay. ओके, ठीक है, अच्छा था वैसे, ठीक. लिखा अच्छा है, नो इशू. तो थोड़ा और Okay. रिसर्च करना चाहिए, और कुछ नहीं. Okay, sir. And sir, the other news, sir, it was, sir, the metal stock are up because of the conflict in the Middle East, sir. Sir, हम्म. share price of the metal increases as it led by the aluminium. The Nifty Metal Index gained 2.3%. So the major gain in the shares are National Aluminium Co. jumped 6.6% on yesterday's, and Hindalco, Lloyds Metals, and Wilson Crops gained over 3% each, while JSW and NMDC rose 2.9% and 2.4%, sir. And like Middle East accounts actually accounts for 8% global capacity for the exports and imports of the aluminium. But as the plant is closed because of the conflict, so so there is a high chance that the price will go up for dollar 3,100 to dollar 3,500 in the near terms. So the my conclusion or is like in the near futures we can see that share price jumps in uh, for the for that National Aluminium Co and Hindalco and other metals. ओके, बट ये न्यूज़ क्यों बोल रहे थे मेटल का. सर क्योंकि ये मेटल का भी सर एज क्योंकि अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, तो हम लोग को लगता है सर मेनली क्या हुआ कि सर क्योंकि अभी हर एक जगह जो प्लांट्स है मिडिल ईस्ट में वो क्लोज हो चुका है, तो इससे क्या होगा कि सर मेटल का प्राइस अप हो जाएगा सर. तो इस अप प्राइसेस के चलते जो अदर कंपनीज है जो हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे उन लोगों का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा होगा सर. तो बता क्या फर्क है नेशनल एल्यूमिनियम और एनएनडीसी के मेटल्स में, हिंडाल्को और उसमें क्या फर्क है, लिखा था सर लॉयड्स. लॉयड का मेटल, वेल्स फार्गो, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या फर्क है तीनों में, मेटल्स में उनमें. फर्क ना, हिंडाल को भी मेटल बनाता है एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम को भी मेटल बनाता है ना. मेरे को पता दोनों में फर्क क्या है, हिंडाल्को के मेटल में और नेशनल एल्यूमिनियम के मेटल में फर्क क्या है. फर्क तो सर तो तुम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, कि सर ऊपर सर जाऊंगा तो मैं इन्वेस्टर बाय सर. करूंगा. तो इन्वेस्टर है तो नहीं फिर सर ये सब क्यों इन्वेस्टर बता रहे हो फिर, इन्वेस्टर है तो फिर ये सब क्यों बता रहे हो कि सर ये बढ़ेगा ये कम होगा. वो तो फिर किस गैम्बलिंग की तरह हो गया ना सर, आज इंडिया हारेगा और इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, अगर लगा दो पैसा क्योंकि सब अच्छे खेल रहे हैं. किस सर. तो ऐसी बातें, तुम ऐसी बातें कर रहे हो फिर कि सर वॉर होगा तो ये बढ़ेगा. इन्वेस्टर हो तो तुम्हारी कंपनी समझ के ही रिसर्च करना है. इट ओके इज सर. नेवर अबाउट इट इज नेवर अबाउट कि वो बढ़ेगा ये कम होगा. तुम प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा वो बताओ, कौन बेचने वाले, कौन प्लेयर्स है तुम्हारे, तुम्हारा ही क्यों बढ़ेगा बाकी का क्यों नहीं बढ़ेगा. तो क्या लिखते मतलब है ना, लिख के तुम इतना टाइम वेस्ट, मतलब वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा टाइम, ऐसा है और कुछ नहीं. पढ़ो तुम, पढ़ने में क्या नहीं है, जनरल नॉलेज पढ़ना चाहिए कि ऐसा हुआ ऐसा बढ़ेगा, परफेक्ट फाइन. पढ़ो, लिख के फिर क्या मतलब है? ऐसा है. ओके लिखने का कोई सर. मतलब नहीं है. I don't want you to spend unnecessary times on things which are not important, which will not help you crack interviews. Sure, sure. Okay. Okay. Sir, as compared to the previous one, sir, how the today Yeah, it is news better. writing? It is better, better. तुम Okay, sure. ये थोड़ा न्यूज और तुम इससे भी अभी ये बिजनेस चैनल से भी देख के करना, तो और रिफाइन करके Okay, प्रॉब्लली sure. आज शाम को भी हमको बता देना अगर आओगे तो. ठीक है sure. ठीक है, Okay, sir. Thank you, वरना sir. काम Thank you, काम. sir. मानव सर मुकेश सर, क्या बात था. सर सर, आज आपने बोला था कि वो होटल इंडस्ट्री पे रिसर्च पे बात होगी, तो मैंने आईएसटीएल पे किया है, तो वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं और आफ्टर क्या द न्यूज़ प्रेजेंटेशन.
नहीं, IHCL का एक रिपोर्ट होता है, वो तुम नहीं कर, तुम्हारे लिए नहीं है वो एक्चुअली दूसरा है, क्योंकि उस पर तुमको पहले पूरा रिसर्च करना है ना, कंपनी प्रोफाइल की तरह है तुम्हारा, तो तुमको बनाना पड़ेगा ना पहले, वो रिपोर्ट की तरह। वो नहीं है, पर मैंने एक्सेल पे सब रिसर्च करके दिया है, पर वो उसमें मतलब कुछ डाउट्स भी हैं। और ये अपना क्लास वर्क का है ना, तो ये क्लास में पूछना तुम शाम को। कुछ डाउट है स्पेसिफिक तो पूछो, ठीक है, क्या डाउट है? एक सेकंड, सबका होने दो ना, फिर पूछो, ठीक है। ओके ओके। ओके, यहाँ मुकेश। Yeah, good morning, sir. So I would like to present on the FMCG space. हम्म, So the FMCG growth moderated in Q3 FY26 due to GST transition effect. So basically what happens is the Kirana stores uh, vendors, they delayed stocking the old inventory. The actual GST on the FMCG space was 18%, and after that GST effect, it was lowered down to 5%. So the Kirana store people, they didn't stock up faster the inventories held by the companies at 18%. That was one. And the consumers also postponed their purchase because when you see the drop was significant, so people actually started like postponing will purchase after the GST cut implementation comes एक in. सेकंड मुकेश, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम, यू हैव टू बी स्पॉट ऑन। वो कस्टमर सोच रहे ये कर रहे, वो मत, व्हाट इज योर पॉइंट, व्हाट इज द न्यूज अबाउट? So the news is about due to transition, Q3 FMCG growth was less, but the revenue was moderate to 7.8%, and volume growth was also down less by 2.6%. That's it. Correct. Volume growth was down 2.6% because of GST rate disruption. Fine. Oh, This is the okay, heading. okay. Now what has led to what is specifically into this? And the companies also So that why did the growth decline? You have written it. Kirana store. Kirana stores, they didn't stock up faster, and the companies had inventories of the 18% tax rate slab products. Yeah. So So what first happened? they have to means that inventory should go out, then only they can print the 5%, That is implement the obviously 5%. that is quite obvious that you don't have to say. Okay. It's So quite obvious. ना older inventory बेचेंगे तभी नया बेचेंगे. That's quite obvious. So the हाँ, Kirana store was delaying the stock of older inventory while waiting for the price to reverse. correct. Yeah, So that was my consumer point. also postponed their purchases, expecting the price cuts or expecting a price cut or a higher grammage package. Grammage, yes. That's it. Okay, news. Okay, What sir. happened because of this? Second paragraph. Yeah. So because of this, I just dig one level deeper, like what the management had commented, like HUL, Britannia, Yeah, you also Marico. said now. So as a result, what happens? So the revenue declined 7 to 8%. So ये तो तुमने पहले बोल दिया है. So in हाँ, several quarters, sorry, the margins also face pressure due to price adjustment, relabeling costs, logistic changes, and higher food packaging. हो गया 2 पॉइंट. एक सेल्स डिक्लाइन हुआ फर्स्ट इसमें, यू सोल्डली सेल्स क्यों डिक्लाइन हुआ? सेकंड तुमने बोला सेल्स डिक्लाइन हुआ तो साथ में इसका मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन. okay. सो डोंट ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन थिंग्स. ओके, Okay, जितना है उतना ही बोलो बस. ओके, एज आई सेड ना, okay. यू ओनली हैव 10 सेकंड्स. मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट बिकॉज वी आर लर्निंग. बट वंस यू आर explain enough, you have to talk in 10 seconds only. Understood, sir. Okay, or Yeah. if you're talking more, then I should have data points for that. It should not be story. Okay, okay, got it. Okay. Okay, now what? Now go one by one. So I would Sir, like to say one on more thing, sir. I had given a write-up on this as well. So can you just go through and give your feedback? Is it right writing or is fine. That's what writing is fine. You're not presenting it in a proper way. okay? Got it. Okay. Okay. And your the 7 to 8 revenue percent should come at the start. FMCG growth moderates means what? How much? Hmm. Moderated to 7.8%. Volume decline to 2.6% amid GST
to transition effect. That should be a heading. Okay. Okay, so data point should be there in your heading. Should not be just decrease, increase, moderated. No. Understood. Okay. Yeah. Thank you, sir. So you said you talked about Unilever, Britannia, and Marico. What was that about? You've written it. Yeah, so I just had a go through of the con call, and Mhm. so based on the recent quarter, say HUL saw this quarter, uh, the revenue and margins profit, revenue mute and profits were boosted up, basically because of the demerger from Quality Walls, and they saw a growth in their revenue Growth due in their to revenue. quick commerce. 3% of their revenue growth came from quick commerce. Okay. And Britannia, they had commented that so Britannia basically is in the biscuit segment. 80% of their revenue comes from there. And they also commented their e-commerce platform accounts for like roughly 7 to 9%. And they saw growth in the e-commerce and in the categories like cakes and croissants in the that segment. And Okay. yeah, and Marigold also, which is your parachute oil. So Mm. that accounts for like 36% of their revenue, and so their revenue was and margins improved basically due to new age brands which they recently acquired. That is their Beardo and Plix. So that is one. And Mm. Bajaj Consumer uh, reported a recovery in general trades uh, due to volume led growth in urban and rural segment, and Nestle also uh, outperformed the peers in revenue growth. So most of them, if you see from the beginning, most of them recorded profit growth basically due to acquisition or acquisition or demergers. That is why the profit grew. And and in connection to the news, so if you see, if you remove that, that is like a one-time event. If you remove that, then the net figures actually the profits have declined. And the management of Dabur and Marico also had commented that they are expecting Q4 to normalize because now the inventories uh, will be gone and the GST benefits is transferred. Okay. Fine. I didn't know need of this, but ठीक है, fine. Okay. Okay. मुकेश, पहले ना तुम ये रीड खुद प्रेजेंट करो खुद को एक बार, एंड देन बात करो. बहुत अटक रहे हो. ठीक है. Okay, sir. Should be fluent while you are speaking. Okay, sir. Should be confident of. See, even if you say wrong, you should be confident about speaking. Communication shouldn't be a gap. Okay, sir. I most of the time while communicating, I feel nervous. That is one No, so that's issue. what first try. So what I have to now, even I used to do have the same problem. I used to write that in a whatever you have to present it, I have to write it in a word format. Okay. And while presenting it, see now obviously I am not looking at you. You have the liberty to speak. Correct. You can even watch and speak. So I have to keep it in my hand, and I have to just read that specifically, whatever I have to present it. Or else you can tell AI nowadays, so you don't have to even write it. You can tell AI to make a 1 minute script for you Okay, and sir. just add and subtract depending on what you like. So first try to what do you say? Try to explain. Sorry, Vidya ma'am always says that first do a check with yourself looking in the mirror. Or maybe just do a let's say if you want to go and present it, just do a recap. Just do a rehearsal before speaking it. So you'll find it Okay. confident. Okay. See, because there is nothing going wrong in this, no? It's just about presenting it. What can happen that you have not presented all the things. You have presented few things.
Let's say out of 10 things, if you have presented 2 things, it's fine, but at least present those 2 things in a better way. It is not wrong. Understood, sir. I'll do it next time. So I'll, go to AI, you can improve become on. you can tell ChatGPT to make a 1-minute script, whatever you have written now. Let's say whatever you have written this, tell AI to make a 1-minute script. And then you can rebalance as per your understanding. How we say, no, it should be filler, you should have a paragraphs and all. Then you can post that or you can read that. Understood, sir. Okay. I'll work on it. Yes, sir. Thank you. Okay. Yeah, Rishikesh? Sir, am I audible? Yeah, you are good. Sir, I have written about auto sales from Economic Times newspaper. Okay. So, automotive sales rise by 26% from increase होता है yeah, Rishikesh, right? okay, increase by 26% from last year's sales of 1.9 million to 2.4 million vehicles, indicating strong economic activity. The major reason is government's allocation of 12.2 lakh crore capex on infrastructure and logistics have yield positive change on automotive. Sir, this data that 12.2 lakh crore capex on infrastructure I have written from Google. So is that right? No idea. 2 lakh, how much was it? 12.2 lakh crore capex on infrastructure and logistics. ठीक है, So I'm not sure what. So you have to prove that कहाँ से लिखा है, but ठीक है, अभी के लिए ठीक है ना? It's okay. okay. So I will start with first two-wheeler. Two-wheeler sales grow from 25% from 1.2 million to 1.7 million, out नहीं, of which 1.3 से 1.7 नहीं. Sir. Two-wheeler sales grew 25% to 1.7 million. 25%. To Okay, 1.7 million ना, 1.3 पहले की बोलने क्या? सी तुम्हारा सैलरी 10% से इंक्रीज होके 1,10,000 हो गया, तो पहले कितना था? Okay, understood. पता है ना 1,00,000, वो क्यों बोल रहे हैं 1,00,000 से 1,10,000 हो गया? पता है Okay, 10% okay. ग्रो हुआ मतलब कितना हो गया? Okay. ठीक है. Out of which two-wheeler sales grow from 25% to 1.7 million, out of which urban sales rise 29% and rural sales rise 22%. This rise come due to marriage season, good harvesting and change in GST. Then I would like to आराम से स्लो. okay. सी कैसा बोलता है? See how I speak. Two-wheeler sales increased 25% to 1.7 million. Stop. So out of which urban sales increased 29% and rural sales increased 22%. This increase was due to marriage season, good harvesting and change in GST. Okay. ठीक है, स्लो बोलो ना, फास्ट Yes. क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर क्या हुआ? पीवी में क्या हुआ? नाउ फिलर यूज Sir, करो, I कौन would सा क्या? नाउ ऑन द पीवी सेल्स. Sir, also I have read that this change in GST because in last September government has reduced GST on two-wheeler with less than 350 cc from 28% to 18%. So should I write that also in report? Fine, it's okay. Okay, You to it's change okay. in GST from 28% to 18%. 18% for the bike which has 350 cc, less than 350 cc. No, so how we can say that? See, the increase was due to marriage season, good harvest, and change in GST from 28 to 18% For for 350 cc by or less less than or less 350 cc. than 350 cc bikes. That's it. Okay. हो गया ना? हाँ. Okay. Okay. Then I will move forward with passenger vehicle. Passenger vehicle sales grow from 26% to 394,000, out of which urban sales rise 21% and rural sales rise 34%. Rural sales accounts for majority of small car sales and urban sales account for majority of SUV sales. Then I will talk about three-wheeler like auto. Three-wheeler sales grow 25% to 1,17,000. Tractor sales also increased by 36% to 89,000. And commercial vehicle sales increased by 29% to 1 lakh due to improvement in freight charges, rising economic activity and growing infrastructure demand. But CG sales dropped by 1%, which is a so I would like to conclude my point of view
that if I talk about two things from percentage, from perspective of total increasing sales in percentage and total volume of sales. If I talk about percentage sales, then tractors have increased by 36%, and from total volume sales, total two-wheeler sales have uh, increased by volume of 1.7 million. So I would like to conclude that दो बार आया two-wheeler. तुम्हारा कंक्लूजन. No, so I would like to conclude that two-wheeler vehicles is a good bet because they are growing by 25% and their volume is very big. So that's it, sir. Hello? One second. एक 1 second. Okay, okay. 1 second. Yeah, sorry, Suresh. सो Yes, sir. कंक्लूजन तुम्हारा 2 बार आया. कंक्लूजन इज एक है ना कि ओवरऑल से तुम्हारा ऑटो सेल्स आर इंक्रीजिंग. अभी कैसा था कंक्लूजन हमेशा फ्यूचर का होता है. सी इसमें ना अभी ये तुमने तुमने कहाँ से पढ़ा है ये न्यूज? Economic Times. हाँ, तो इसमें भी आया था. ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी था. यहाँ पे भी आता पॉजिटिव सेगमेंट फॉलोइंग help improve secondary demand and bulk purchases. Some pockets saw supply chain constraint from overall pipeline of bookings and market movement remain encouraging. तो तुमको हमेशा आगे की बात करना है कंक्लूजन में. ठीक है, Okay. ओके. या फिर तुम Okay. गूगल करो कि आगे क्या लगता है, या तुम्हारे हिसाब से ओवरऑल ना इसमें ग्रोथ हो रही है ना, आगे भी ग्रोथ होगी. Okay. ठीक है, या फिर बोल रहे थोड़े पॉकेट में प्रॉब्लम है बट द ओवरऑल बुकिंग लुक्स एनकरेजिंग टाइप्स. Okay. फिर यही तो भी लगेगा डीलर्स एट्रीब्यूट द परफॉर्मेंस टू इंप्रूव रूरल इक्विटी फॉलोइंग गुड क्रॉप आउटकम. तो ये क्या फ्यूचर की बात कर रहा ना कि Okay. फ्यूचर में जाके ऐसा है कि इफ रूरल इज डूइंग गुड द प्रॉब्ली गुड क्रॉप वुड लीड टू ग्रेटर आउटकम एंड अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्कीम्स. तो ऐसा तुम फ्यूचर में बात कर सकते हो. ओके. Okay. Sir, I have just one question. हम्म. Like, I would like to ask that there is a volume and there is a amount, like हम्म. amount in rupees and volume. So हाँ, should I write volume in shortcut? Also write 1.5 million volume and 1.5 million rupee also. Both should I write in shortcut, or I should write in shortcut only amount and volume? I should write that whole amount. हाँ, वॉल्यूम में यूजुअली यू राइट द होल अमाउंट बट व्हेन यू Okay. प्रेजेंट इट, अभी तुमने लिखा 1,18,000. जैसे अभी ये बात है, चलो तुमने है जैसे 3,94,768 यूनिट्स. ठीक है, Oh, ये तुमने लिखा. ओके, तो तो लिखते वक्त तुम वही लिखोगे 394K. 3,94,000. बट जब Okay. तुम प्रेजेंट करोगे तो इट विल बी अराउंड 3,94,000. Okay. Okay. ओके, गॉट इट. तो कि वॉल्यूम का प्रेजेंट करते वक्त तुमको वो नंबर नहीं बोलना है. ओके, लेकिन अमाउंट का शॉर्टकट में लिख सकते हैं. अमाउंट तो शॉर्ट, क्योंकि अमाउंट का सी अमाउंट का मेरे पास 1,10,00,000 है. कुछ फर्क पड़ता है? तुम नहीं, 1 करोड़ बोलो, 1,10,00,000 बोलो. नहीं, नहीं. हाँ, तो इसके लिए फिर 1 करोड़ बोलते हैं. हाँ, अगर मेरे पास 1,50,00,000 है तो मतलब 1.5 करोड़ है या 15 मिलियन है. ठीक है, पर अगर वो अमाउंट एकदम ही छोटा है तो मैंने बोला एक डेसिमल तुमको रखा, दो नंबर्स है तो 1.5 लिखो. ठीक है, दो दो ओके. नंबर है तो 15.2 लिखो, ऐसा एग्जाम्पल. बट ओके. 3 नंबर पे लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. तुम अगर बोलते हो मेरे पास 100 मिलियन है मतलब तुम्हारे 10 करोड़ रुपए है, तो सौ ओके. मिलियन पॉइंट टू क्यों लिख रहे हो? मतलब तुम बोल रहे हो 10,20,00,000, क्या मतलब है लिखने का? ओके. ठीक है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. ओके, तो थैंक यू वॉल्यूम में सर. अगर तुम्हारा वो नंबर 3 से ऊपर जा रहा है तो नहीं लिख, 2 से ऊपर जाए तो ही लिखना है. 2 तक है तो कुछ जरूरत नहीं लिखने की वॉल्यूम्स में, सॉरी तुम्हारे रुपीज में, अमाउंट में. अमाउंट में. जैसे 3 जाता है वैसे यू हैव टू राइट. ओके. ठीक है, ओके. जैसे 100,000 हो गया तो ठीक है वो लिखना है. फिर 2 रहेगा तो 2 पॉइंट. ठीक है, फिर ऐसा है कि 22,500. ठीक है, वो क्योंकि 22,500 बड़ी अमाउंट है, 22,500 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो ओके. रेंज में. पर 100 मिलियन पॉइंट टू नहीं लिखना है, ऐसा टेक्स्ट. ओके, अंडरस्टूड. ओके, ओके, सो टू थैंक यू. जैसे 2 डिजिट्स 1 डेसिमल.
2 डिजिट या 1 डिजिट में एक डेसिमल, 3 डिजिट्स आया तो कोई डेसिमल डालना नहीं है। Okay. Okay, sir. Understood. Thank you. अदर्स ऑल्सो वॉल्यूम, व्हेन यू राइट वॉल्यूम्स लिखते वक्त, क्योंकि वॉल्यूम्स है वो तो इंपॉर्टेंट है वो नंबर, बट जब प्रेजेंट करोगे तो सुन 394,000 यूनिट्स ऐसा प्रेजेंट, ऐसा बात करने ऐसा बात करना। Okay, sir. Thank you. Thank you. या कृष्णा, कृष्णा इतना लेट न्यूज भेजा तुमने 11 बजे? हाँ सॉरी सर, वो थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा आधा मार्केट मूवमेंट हो गया। ठीक है, सर वो मैंने गो लिख तो मतलब पहले लिया था, फिर मैंने भेजा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट QSR. So overall QSR brand net new store growth averagely decreased by 28%, despite sector CAGR of 23%, outpacing overall food service industry, which only grew at 9%. To give a context, US has 41 MACD outlets per million people, 21 for Domino's, 12 KFCs, and 20 Pizza Huts. In comparison, despite being the most populous country, India only has zero point 0.5 MACD per million people, 12 KFCs, 20 Pizza Huts, and 1.5 Domino's, which is far below than global average, indicating massive headroom for expansion. But Q3 FY26 data shows large QSR has seen drop in net store addition compared to Q3 FY25. Largest QSR, Jubilant Foodwork, operator of Domino's, which have 50% market share in organized pizza segment, saw 12% decrease in new store addition. Devyani International saw 20% drop. Sapphire Foods, which already announced merger with Devyani, saw 42% decline, and Best Life Foodwork saw 33% decline. On an average, payback period for their store is 2 to 3 years. Uh, Jubilant having the earliest payback of around 1.8 years to 2.5 years. The main reason for new store slowdown is because 70% of sales are now coming from online, especially through food delivery platforms, which on an average contribute 46 to 50% of total online sales. Uh, while it saves upfront cost of around 6 to 10 CR per store, but it also deteriorates margin, as this food delivery platform charges 30 to 35% of total order value. Furthermore, urbanization is pushing growth, as by 2030, 3% of total population will shift towards cities. At the same time, per capita is increasing at a CAGR of 8%, and higher young population also plays a major role, with a median age of 28 years in India, while in US is 38.5 years. All this is driving growth. To conclude, QSR companies are now in dilemma to maintain margin or to open new stores. Maintaining margin by promoting their own online apps sees the best way for their future margin expansion, as they have high operating leverage in it. Thank you. That's all from my side. ओके, कृष्णा मस्त था, अच्छा, इट्स अ गुड न्यूज, बट Okay, sir. काफी बड़ा हो गया, इट्स क्वाइट बिग। मुझे ना ये ऐसा दिख रहा है मेरे फोन में, इतना बड़ा दिख रहा है, Yes, तो sir. अभी इसको छोटा कैसे कर? okay. तो क्या कर Sir, सकते हैं मतलब डेटा पॉइंट्स थे ओवरऑल? उसमें। हाँ ठीक, अच्छा है, न्यूज अच्छा है, नो डाउट, मतलब काफी अच्छा लिखा है। मेरा ये क्वेश्चन कि अभी इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, काफी बड़ा है। क्या करो, एआई को बोलो मेक दिस इनटू 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट, ओके, Okay, या okay. 1 मिनट स्क्रिप्ट, तुमको ये समझेगा कि ये Okay, sir. बात कैसे करनी है। डेटा पॉइंट्स तक काफी, अभी कितने डेटा पॉइंट्स में बताने हैं वो भी, अभी जैसे QSR segment is growing at a CAGR 23%, outpacing the overall industry, which grew at 9%. ओके, एग्जाम्पल मैं ना Okay. थोड़ा रिफ्रेम कर रहा था कि मेरे हिसाब से करता हूँ, अच्छा न्यूज़ है, आई लाइक इट। ओके, सो टू गिव एन कंटेक्स्ट, अभी टू गिव अ कंटेक्स्ट, ये तुमको लिखने की क्या जरूरत है, टू गिव अ कंटेक्स्ट, यूएस हैज 41 McDonald's outlets per 100 million, 21 outlets, 20 outlet pillar. In comparison, despite the most populous country, India has 0.5 outlets. So ये तुम क्या कर सकते हो, US has 41 McDonald's outlets per million, whereas India has 0.5 McDonald's outlet per million. इसको तुम Okay. बस कर सकते हो, मतलब दोनों को, जैसे US has
So if you so कैसा है in a चलिए to give a context I think give a context अगर लिखना है तुमको give a context US has 41 outlets per million versus 0.5 of India. ठीक है ये हो गया एक Okay. KFC 20 pizzas और फिर क्या दिया 20 pizzas अच्छा ठीक है US है 41 मैकडोनल्ड्स अब ये तो मेरे लिए KFC एंड पिज्जा तो काफी कम है इन कंपैरिजन डिस्पाइट द मोस्ट पॉपुलर कंट्री हैज 0.5 मिलियन ये क्या है 12 20 ये क्या सेम क्या है 1.5 which are far below the global average indicating a massive headroom Yes, sir. ये क्या अलग से यहाँ पे तुमने लिखा है फॉर यूएस एज 41 मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स पर मिलियन 21 फॉर हाँ डोमिनोज अच्छा हाँ, मतलब कि 21 20 41 अच्छा डोमिनोज पे पर 21। 100 अच्छा ओके हाँ 21 फॉर डोमिनोज इधर भी 12 है इधर भी 12 है इधर भी 20 है इधर भी 20 है क्या नहीं, कुछ ये यूएस का है और वो नीचे वाला इंडिया का है। हाँ बट सेम है ना दोनों वो मैं बोल रहा हूँ सेम कैसे हुआ तो KFC सेम है ना, सिर्फ 20 पिज्जा पिज्जा हट भी पिज्जा सेम है। पिज्जा ऐसे नहीं सेम पूरा का पूरा सेम है कुछ तो गलत लिखा तुमने पूरा का पूरा सेम मैं कैसे चेक होगा करता हूँ सर एक बार। ठीक है तो ठीक है अभी के लिए यूएस हैज टू गिव अ कंटेक्स्ट यूएस हैज 41 McDonald's per outlet versus 0.5 million 0.5 of India which indicating a massive headroom for expansion okay which is far below than global ओके average ठीक है ये हो गया तुम्हारा एक पैराग्राफ तुम्हारा हो गया ठीक है ओके। ओके फिर आया तुम Q3 डेटा शोज दैट अभी ये तुम लिखते हो ये लिखने की जरूरत क्यों है Q3 डेटा शोज लार्ज QSR हैज सीन अ ड्रॉप इन स्टोर एडिशन Q3 हैज सीन अ नेट ड्रॉप इन एडिशन Q3 ओके FY26 सर। has shown a net drop in the addition. The largest QSR jubilant food operators, Domino's. See वापस largest QSR operator की Domino's have seen us. तुमको नहीं लिखना ये सब अभी तुम एनालिसिस नहीं कर रहे तुम मुझे बता रहे हो क्योंकि मैं भी एक फंड मैनेजर हूँ मुझे भी ये सब चीजें पता है डोमिनोज इज द लार्जेस्ट प्लेयर ठीक है ओके सर। अभी मैंने कुछ पूछा डोमिनोज क्या तुम बताओ कि सर लार्जेस्ट अभी तुमने जैसे लिखा लार्जेस्ट QSR अगर मैं तुमको एक डेटा पॉइंट पूछू तो कितना मार्केट शेयर है सर लिखा है ना 50% है ना उसमें 50%। लिखे। हाँ तो लिखा है Domino's, which hold a 50% market share, saw uh, saw 14% decline in new store additions. ओके सर। Okay, क्या मतलब मैं क्या करता हूँ अभी तेरा सेकंड हेडिंग क्या होगा तुम्हारा Q3 FY26 saw a sharp decline in net store addition. Okay, ओके okay. So obviously, I compared to Q3 FY25. Okay, ये हो गया तुम्हारा हेडिंग ठीक है तो ऑब्वियसली अभी इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स है नहीं तो ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट डेटा पॉइंट्स टू बी रिटन बिलो ठीक है ओके कुछ दिया नहीं इस पर अगर दिया होगा तो तुम डाल सकते हो कि ओवरऑल कितना डिक्लाइन हो गया मतलब नेट एडिशन Q3 में कितना डिक्लाइन हो गया है वो स्पेसिफिक तेरा चाहिए सो डोमिनोज विच आर 50% मार्केट शेयर नहीं सर, 50% लिखा ना मार्केट शेयर 12% डिक्रीज इन न्यू स्टोर नहीं इसका एडिशन। नहीं ओवरऑल नेट एडिशन में कितना डिक्लाइन है तो तुमने कंपनी स्पेसिफिक लिखा है ना अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक मिलता है तो ठीक है अभी नहीं मिला है ओके तो इट्स फाइन ओके ओके तो डोमिनोज सो इसमें फिर क्या होगा डोमिनोज अभी बोलते हैं डोमिनोज 100 12% डिक्लाइनिंग स्टोर एडिशन ठीक है अभी तुमको पता है मैं ये क्यों बोलता हूँ कि तुम कोई कंपनीज पे रिसर्च करो जो हमको पता है क्योंकि सबको पता है डोमिनोज क्या करता है ठीक है सबको पता है देवियन इंटरनेशनल क्या करता है यानी देखो KFC बोला करते हैं कि विच इज अ नहीं पता तो KFC क्या करता है ओके देवियन यस सर। इंटरनेशनल KFC विच ड्रॉप और ये सफायर भी KFC फूड है ये यस तुम सर। बोल सकते हो ये हो गया डोमिनोज सॉ डिक्रीज ऑफ 12% स्टोर एडिशन वेर एज देवयानी इंटरनेशनल वेर एज देवयानी इंटरनेशनल एंड सफायर फूड Sapphire Food saw a decline of 24% and
42% रिस्पेक्टिवली। आया वही यस सर। वही बता रहे ना। यस सर। डोमिनोज ठीक है, मतलब जरूरत नहीं है डोमिनोज, पूछा नहीं है ना, पूछा नहीं तो क्यों बोला, तुमको पता है, अच्छा तुमने पढ़ा है, अच्छा 50% मार्केट शेयर इज फाइन। एंड वेस्ट लाइफ भी, वेस्ट लाइफ फूडवर्क सॉ नेट डिक्लाइन ऑफ। तो क्या हो गया, एक ही इसमें तुमने मुझे तीनों के बारे में बता दिया, एक ही पैराग्राफ है। तो मुझे पता है कि तुम बोल रहे हो शार्प डिक्लाइन हुआ है, किस किस में हुआ है सर? डोमिनोज में 12% हुआ है, देवयानी इंटरनेशनल में 24 और 42% हुआ है। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स एंड वेस्ट लाइफ फूडवर्क saw a decline of 24, 42 and 33%. ओके ओके सर, सर। तुम यूजुअली हम उल्टा लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, पहले ये लिखना है ना मुझे, तो मैं पहले 42 बोलूंगा, सबसे ज्यादा क्या गिरा है, सफायर फूड्स, सेकंड गिरा है यस सर। वेस्ट लाइफ, थर्ड गिरा है देवयानी। तो हमें ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ओके सर। ओके, तो ये हम, तो क्या हो गया, ये सब तुमने एक साथ ही लिख दिया। सो ऑन एन एवरेज द पे बैक पीरियड फॉर स्टोर इज 2 to 3 years, जुबिलेंट हैविंग। हाँ, ये एक अलग, फिर ये अलग डेटा हो गया ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद स्टोर एडिशन। यस सर। तो ये तुम्हारे फिलर्स के साथ आएगा। सर द पेबैक सर, जुबिलेंट एंड एवरेज पेबैक, इसमें भी ऑन एन एवरेज, एवरेज पेबैक पीरियड फॉर QSR, ये था ना, फॉर इंडस्ट्री डेटा ना, फॉर QSR यस सर। इंडस्ट्री। is QSR store is around 2 to 3 years, whereas Jubilant has the earliest payback of around 1.5 to 2, 1.8 to 2 years. अलग है ना वो डेटा पॉइंट, इससे रिलेटेड है नहीं नेटिंग रेट। यस। हाँ, फिर अभी ये सब हुआ क्यों है? The main reason for the new store slowdown is because 70% of the sales are now online driven, especially through food delivery platform. On an average, contribution of 40-45x from, अच्छा, so ये क्या on an average contribute for 46 to 50% total online sales while it, अभी ये क्या था? The main reason is because the stores 40% on online sales, ये एक था, और ये क्या, especially food delivery platform which on an average नहीं contribute 40 to 50% online sale, which is save upfront 6 to 7 crores, ये क्या था? सर, What is this? 70% तो मतलब कि ऑनलाइन सेल्स आती है उनकी टोटल। हाँ तो फिर हाँ, 46 to 50 तो ये फूड की तरफ से आती है, फूड जो प्लेटफॉर्म होते हैं जोमेटो वगैरह, और जो हाँ, रिमेनिंग है वो इनके खुद के प्लेटफॉर्म से आती है। अच्छा ओके, ऐसा लिखा है क्या? Okay. हाँ। अच्छा, तो 50 to 30, फिर 50-20 हो गया ना, 50% फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स एंड 20% तुम्हारे रिमेनिंग रिमेनिंग क्लास, ओन विच सेव्स अराउंड प्लेटफॉर्म। 6 to 10 crore per store, but it is deteriorating margins as a food delivery platform charges। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेम कर सकते हो गया ना न्यूज, इतना कम हो गया तुम्हारा न्यूज, तुम्हारा देखो कितना बड़ा हो रहा था। यस सर। वो क्या होगा, वो पढ़, अभी ये भी दो दो पार्ट में डिफाइन होगा ना, ये भी देखो, एक तो ये पार्ट था कि स्लो डाउन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन सेल्स। ओके, 70% डिक्लाइन इन सेल्स बिकॉज ऑफ फूड डिलीवरी, स्टॉप। फिर फूड डिलीवरी अकाउंट फॉर 40 to 50% ऑफ ऑनलाइन सेल्स, whereas the 20%, whereas the others contribute from the stores sales। तो इसमें क्या हो रहा है, द ऑनलाइन, सो द फूड डिलीवरी इज सेविंग, sorry, online is saving 6 to 10 crores per store, but it is deteriorating the margin as the food delivery is charging 35। तो ये भी दो पैराग्राफ में डिवाइड होगा, दो पैराग्राफ है, दो अलग अलग वे में डिवाइड होगा, हेडिंग सेम ही है पर अलग अलग में। ओके सर। Furthermore, the urbanization is pushing growth for the population shift towards cities at the time। ठीक है, ये तुम फिर कर सकते हो, ये हो गया तुम्हारा लास्ट। तो क्या है कि थोड़ा मुझे भी समझ में आया न्यूज कि क्या लिखा है, वरना मैं ये पढ़ा नहीं था, तुमने तो अभी भेजा ऑब्वियसली, तो मैं पढ़ा ही नहीं था, बट जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो इतना बड़ा लग रहा है मुझे वो। ओके सर। ओके, तो ओवरऑल यस अगर सर। मैं सम अप करूँ सिर्फ छोटे, अगर ये चीज में छोटे में मुझे बोलना है बिना एक बॉल पार्क नंबर्स पे, तो मुझे क्या QSR में
नेट सेल्स स्टोर डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वही था तुम्हारा हेडिंग कि स्टोर Yes, sir. न्यू स्टोर ग्रोथ नहीं हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ मेजरली फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आर ग्रोइंग एंड मेजरली सेल्स 70% सेल्स ऑनलाइन आ रहा है, एंड उसमें से भी 50% फूड डिलीवरी से आ रहा है, एंड दे आर चार्जिंग अ Yes, sir. हायर they are charging a higher fees, so that is why it has led to decreasing in the margins for QSR companies. Yes, sir. तो एक टाइप से सेल्स तो ग्रो हो रहा है, सो फ्यूचर में तुमको ये बोलना कि सर नेट स्टोर ग्रोथ तो प्रोबेबली देखना नहीं चाहिए अभी तो, क्योंकि सब ऑनलाइन पे जा रहा Yes, sir. है, एंड इट इज गुड कि सर हर एक ऑनलाइन स्टोर पे 6 से 10 करोड़ रुपया बच रहा है, तो एक साइड से अच्छी भी साइन है, कैपेक्स बच तो रहा है इनका, मार्जिन्स में सिर्फ दिक्कत मार्जिन आ रही है इम्पैक्ट हो मतलब। रहा है। तो ऑब्वियसली विद वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स की मतलब अभी अगर ये इंडस्ट्री में तुमको ग्रो होना है, लेट्स से अगर तुम डोमिनोज हो या तुम देवयानी हो, तुमको वॉल्यूम्स ही चाहिए, और वॉल्यूम्स के लिए प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। यस सर। Correct. तो ये मुझे आज समझा एग्जाम्पल, अगर मैं एक एनालिस्ट हूँ, क्यूएसआर ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सर ये सब तो स्टोर स्टोर एडिशन तो हो ही नहीं रहे नए बात, और स्टोर एडिशन करना इज लाइक वेस्ट की 6-10 करोड़ तुम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि स्टोर में वैसे भी फुटफॉल आ नहीं रहा है इंडिया में, बिकॉज ऑफ और जो ऑनलाइन आ रहा डिलीवरी। है वो फिर कैनिबलाइज भी हो रहा है कुछ। हाँ, कैनिबलाइज भी हो रहा है, करेक्ट। So it doesn't make sense expanding the stores. It is probably makes sense to increase the online presence. ऑनलाइन प्रेजेंस। तो इनको अगर ठीक है फूड डिलीवरी से नहीं ढूंढना है, तो खुद के ऐप तुम बनाओ और बेचो। यस। डोमिनोज ये कर रहा है, डोमिनोज खुद के ऐप दे रहा है, तुम देखो डोमिनोज, मतलब मैं जब ऑर्डर हाँ यस करता हूँ, सर। मैं डोमिनोज के हाँ ऐप से ऑर्डर करता हूँ। हाँ सर, मैं भी वहीं से करता हूँ। हाँ, बट हम देवयानी और इससे मुझे नहीं लगता कि तुम KFC, मैकडोनल्ड्स, आई नहीं डोंट नहीं थिंक, मैं सर। ज्यादा मैकडोनल्ड्स जोमेटो से मंगाता हूँ, यस सर। कि मैकडोनल्ड्स का ऐप इतना अच्छा है नहीं। KFC और ये तो मतलब, और कौन सा इसमें, KFC और क्या है, पिज्जा बर्गर हट। किंग, पिज्जा हाँ हट, बर्गर किंग का वो तो तो, फ्लैट था मतलब कि स्टोर ग्रोथ। हाँ, तो वो तो हम ऑर्डर कर ही नहीं रहे हैं, उनका तो कोई ऐप ही नहीं है। यस सर। है क्या, ऐप तो है नहीं ना दिया, आई थिंक मैं तो कभी यूज नहीं किया, बर्गर सर मैंने किंग, भी नहीं किया इनका। पिज्जा, क्या हुआ, किया है तुमने? बर्गर नहीं, मैंने नहीं किया। बर्गर किंग का मेरे ख्याल हाँ से है, ऐप है, पर यूज नहीं हाँ, किया वही मैंने। ऐप है वो सर इनका, बट है वो ना, वो यूआई यूजर खराब फ्रेंडली है। नहीं है, आता नहीं होगा, आउटलेट्स नहीं होंगे, ये भी है, ऐसा है। Okay, तो न्यू स्टोर ग्रोथ से अलावा यहाँ पे सेम स्टोर ग्रोथ की बात होती है QSR में, सेम स्टोर ग्रोथ, यस सर। तो वो फोकस होना चाहिए rather than न्यू स्टोर ग्रोथ। तो न्यू स्टोर ग्रोथ में अभी अगर तुमको कल कोई पूछे इंटरव्यू में कि ये न्यू स्टोर ग्रोथ में नहीं हो रहा है, तो ग्रो कैसी होगी कंपनी, तो अभी सर कंपनी हैज टू ग्रो ऑन द ऑनलाइन सेल्स, क्योंकि दिख रहा है कि लोग ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, ऐसा बोलने का सर, मैं खुद जाता नहीं हूँ, मेरे दोस्त जाते नहीं, हम कभी रह रहे। तुमको याद है कब तुम यस जाके सर। डोमिनोज में बैठ के पिज्जा खाया लास्ट? नहीं सर, वो ऑनलाइन ही अब मंगाते हैं फिर। ऑनलाइन ही मंगाते हैं हम, गए, ऑनलाइन ही हाँ। मंगाते हैं। और एकदम रेयर सिनेरियो होगा जब तुम तुम्हारे सिटी में नहीं हो और तुमको खाना है, तो तुम बाहर जाके खाते हो उसमें, यस दैट इज द सर। ओनली टाइम यू ईट इन डाइनिंग जाके, कि तुम किधर घूमने गए हो और तुमको होटल में हो तुम या किधर हो, तो वहां पे तुमको ऑब्वियसली वो घर तक नहीं आएगा, तो तुमको डोमिनोज दिख गया, तुम वहीं जाके खाते हो। लोकल यस लाइट्स सर। डोमिनोज में बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। मेरे इधर जितने भी यस सर। स्टोर्स हैं आधे से खाली होते हैं। मैं आई डोंट रिमेम्बर, मेरे बाजू में ही है, पर मैं कभी गया नहीं उधर स्टोर में। राइट सर। तो दिस इज योर, तो अभी क्या है, हमको इससे समझा, तुमने जो लिखा है उससे समझा, मुझे भी नहीं पता था, बट तुम्हारा जो पढ़ा मैंने, एक वे में मैंने लिखा, तो मैं समझ गया कि हो क्या रहा है। पर अभी देखो, मुझे इतना टाइम लगा तुम्हारा पढ़ने में, तो ऑब्वियसली ये सब तुम्हारा काम है, ये सब करके देना, ठीक है, हाँ यस सर। ओके। प्रेजेंट करना, ऑलराइट, ओके। ओके। अच्छा लिखा है, लिखा, अच्छा इसको थोड़ा रिफ्रेम करो, एंड स्टॉक्स थैंक के यू वो भी सर। लिखो नीचे, निफ्टी कितना है, देविया ने कितना है, वेस्ट लाइफ का क्या प्राइस चले, वो कौन लिखेगा? लिखता हूँ सर। क्योंकि तुम ट्रैक कैसे करोगे, आज ये बताया, आगे क्या हुआ, 1 महीने बाद क्या हुआ इसमें? हाँ लिखता हूँ सर अभी अभी। ओके। Okay, guys, I think it's late. We'll wrap up for today. तुषार, तुमने इतना लेट क्यों आते ऊपर किया? तुषार एंड शिवराज, I have to go. I have a call in few minutes. तुषार, तो Sir, मंडे को I प्रेजेंट have करोगे तुम्हारा raised रिपोर्ट? the hand. नहीं, आई डिडंट सी योर हैंड Yes, रेज। sir. चले। ठीक है, मंडे को पक्का प्रेजेंट करना तुम्हारा रिपोर्ट ही है। विद्या मैम को प्रेजेंट किया तुमने? नहीं सर, विद्या मैम को नहीं किया था ये वाला। हाँ, तो आज करो ना फिर विद्या मैम को, फिर ये ना तुम्हारा ओके वेब सर। अपडेट।
एंड पहले ही बोलना, मतलब स्टार्ट में ही करते हैं, यस और बिकॉज क्या है एंड में सबके आते ना तो इट टेक्स टाइम। तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर लो सो दैट सबको पता चले कि हुआ क्या है। बिकॉज एक बार वो न्यूज चलते तो इट इज बेटर टू सी ओके न्यूज एंड थिंक कि सबका एक आसपास ही होता है ना न्यूज। बीच में तुम्हारा रिपोर्ट होगा एंड फिर न्यूज होगा तो यस सर प्रॉब्लम। पार्थ था, तुमको ओके कुछ सर डाउट था? हाँ, हाँ, यस सर। हाँ, क्या था? यस सर। बोलो ना। यस सर। सर ये जैसे कि मैंने उस पे IHCL पे रिसर्च किया था, हम्म, एंड उसमें सर ये ARR निकाला, जिसमें नंबर ऑफ सोल्ड जो होता है उसमें 1,07,15,000 आया क्लोज टू। तो उसका मतलब क्या होता है ARR में? एक सेकंड। ये जो है तुम्हारा, मुझे फाइल भेजोगे ना पार्था, अपना यस नाम सर। लिखना हमेशा। बिकॉज सब लोग मुझे फाइल सेम ही सेंड करते, सेम ही कंपनी का, तो मुझे कैसे समझेगा तुम्हारा फाइल है? ओके सर। ठीक है, ये वाला। ओके, ऑलवेज। ओके। ठीक है, ठीक है। वो एक डेकोर मेंटेन करते हैं, बिकॉज मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ वीकडेज को, ठीक है? वीकडेज को मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तो आई वांट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। ओके सर। ओके, या। Sir, सर I have also sent you the news. व्हाई शिवम, व्हाई डिडंट यू रेज योर हैंड? मैं बोलता हूँ ना, मुझे समझेगा नहीं ना, बिकॉज सी काफी लोग वर्किंग भी है तो वो लोग न्यूज भेजते हैं, बट आई डोंट टेल देम बिकॉज वो लोग हैंड रेज नहीं करते। सो इफ यू आर I राइटिंग अ was न्यूज, not यू प्रेजेंट इट, knowing. I रेज was अ not हैंड। knowing that. अच्छा, ओके। नहीं, मैं बोलता हूँ ना स्टार्टिंग में ही, सुबह सुबह। इज दैट, क्योंकि बोला ना कि सब लोग नहीं होते ना अवेलेबल, वो लोग लिखते हैं, भेजते हैं, कॉल पे होते हैं बट दे कैन नॉट स्पीक। दैट इज व्हाई। ठीक है शिवम, नेक्स्ट टाइम से प्लीज रेज योर हैंड। Okay, sir. हाँ, क्या हुआ प्रार्था इसमें? सर ये ये वाला। ARR IHCL का 17,700 था, तो हाँ, उसमें मैंने नंबर ऑफ रूम सोल्ड निकाला तो इट्स लाइक 7,15,000 क्लोज टू आया, तो नहीं नहीं, नंबर ऑफ। ये नहीं आएगा तुमको, डायरेक्टली नहीं कर सकते तुम वो बहुत डिफिकल्ट है ये। अच्छा। तुम नहीं कर, क्योंकि एंड वो नंबर ऑफ रूम कैसे होता है, सेम ही रूम होता है ना, हर बार सेल होता है, तो वो डेज से डिवाइड होता है, तो तुम वो नहीं कर पाएगी, नंबर नहीं आएगा तुमको। तो ये ओके मत ओके। करो, ओके। नंबर ऑफ रूम। एंड सेकंड इज लाइक मैंने सेगमेंट वाइज की कितना रेवेन्यू होटल से आता है एंड अदर थिंग्स से हाँ, आता है, तो उसमें टोटल 6,924 आया रेवेन्यू। बट हाँ, जब सेगमेंट वाइज करता हूँ, ज्योग्राफी वाइज के इंटरनेशनली कहाँ से आता है एंड हम्म। डोमेस्टिक लीजर से एंड अदर लोकेशन से, सो 6,035। पर ये सर 900 का जो गैप है, इसका कुछ कहाँ से पता लगा पाऊंगा मैं, कैसे है वो नहीं पता। कौन सा नंबर है सॉरी, ये नंबर से टाली हो रहे थे हमारे। किसकी बात कर रहे हो, ये नंबर की बात कर रहे हो? सर 6,924 जो है, ये सर ताज के जो सेगमेंट्स है लाइक विवांता, सिलेक्शन, क्यू, हाँ, गेटवे, ये इन वाला, सब हाँ। से जो आता है ये 6,924 रेवेन्यू आता है। बट हाँ, जोग्राफी वाइज में कि डोमेस्टिक बिजनेस से कितना आता है, इंटरनेशनल बिजनेस से कितना आता है एंड फिर अदर लोकेशन से कितना आता है, तो वो 6,035 है। तो ये 900 करोड़ का जो गैप है, ये कहाँ से पता लगा पाऊंगा मतलब? नहीं तो 53 तुम्हारा आता है डोमेस्टिक से, बराबर, इंटरनेशनल यस था सर। ना? नहीं तो वो अदर्स में होता है, परसेंटेज वाइज होता है फिर वो। अभी ये तुमको जो आया है, जो जो बचता है वो अदर्स में जाता है, ये जो फर्क है ना यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड मेरे को देखता हूँ, कौन सी ईयर का है ये पीपीटी? ये सर Q3 का प्रेजेंटेशन में भी दे रखा है, क्वार्टर पर थ्री का ना? इसमें क्वार्टर थ्री में फर्क है। था। यस एक सर, सेकंड, IHCL के। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, वो फर्क पता है, बट वो यूजुअली परसेंटेज में होता है। क्वार्टर 3 ना? यस सर। क्वार्टर 3 तो 25, नया ये वाला रिसेंट वाला। यस यस सर, रिसेंट वाला। कहाँ पे वो नंबर 603 का? पर शेयर ये कर वाला, लेता ये हूँ। बोल रहा हूँ।
ये यस सर। तो इसमें ये नीचे अगर लिखा हुआ है 6924 एंड 6035। आया कंसिडर सो दैट 60। तो ये 924 यहाँ से था ना, इसका रेवेन्यू देखा तुमने, ये 900 करोड़ एयर कैटरिंग का था, ये सिर्फ होटल सेगमेंट का है, ये सिर्फ होटल सेगमेंट का है। पर ये तो 100 होना चाहिए ना, 53 तो 100 होगा ना, ये 53 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20। हाँ, ताज, ताज सैट्स नहीं, ताज सैट्स भी दिया है ना इसमें, ताज सैट्स। तो सी ब्रांड्स तुमने ये क्या है, ये ना स्पेसिफिकली पिलर्स ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। यहाँ पे देखो, IHCL कंसोल होटल सेगमेंट रेवेन्यू, होटल सेगमेंट रेवेन्यू से नंबर ये टैली होता है, ये रहा होटल सेगमेंट रेवेन्यू, ये रहा, सॉरी टैली हो रहा है 6035। यस सर। और बाकी का जो बचा है वो ये एयर है, कट। समझ रहे? 895 जो है, जो फर्क है वो ये वाला है, जो तुम्हारे ताज सैट्स का नंबर है। तो ये जो 924 है, इसका ब्रेकअप ये है, ठीक है। बट 924 का भी ब्रेकअप है, 6035 और 895। बट 6093 का भी तुमको ब्रेकअप दिया है कि ओके। 6093 ऐसा आ रहा है, सर 6035। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रूम्स कैसे पता लगा पाएंगे, अगर वो नंबर ऑफ रूम्स कीज होती हैं हाँ, या। कीज होती है, कीज ये ऑपरेशनल कीज 32,000, ये उसके कीज है। ओके अब अभी जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो इतने कीज पे आ रहा है, ओके ओके इतना रेवेन्यू 6035 आ रहा है वो इतने कीज पे आ रहा है। ओके ओके ओके, तो ओके इसको बैक कैलकुलेट मत करो, नहीं होगा वो कि ओके ऑक्यूपेंसी देख के वो, क्योंकि अलग अलग नंबर्स होते हैं उसमें। ओके ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू। यार आज तुम कॉल पे थे? सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ, सर ऑटो इंडस्ट्री के रिपोर्ट के लिए सर ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डेटा भी ऐड कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, ट्रैक मत करो, कम मत, ओके 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 आज ओके कमर्शियल व्हीकल तक ही रखो। ओके सर। ओके, राज तुम भी अगर कॉल पे हो तो हाथ ना रेस किया करो, मुझे समझा नहीं, देखा तुम्हारा न्यूज मैंने पढ़ा, मुझे लगा तुम हो नहीं कॉल पे। एक्चुअली सर थोड़ा आज बिजी था इसलिए हैंड रेज नहीं किया। आई वाज लिसनिंग टू द अच्छा, ओके फाइन फाइन। ओके गाइस, गुड डिस्कशन टुडे। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस एवरी डे। तो सोचो ऐसा अगर 3 महीने हम रोज करते हैं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, योर स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव्स अ लॉट। मतलब तुमको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जॉब की ढूंढने के लिए, तुम खुद अप्लाई करो, खुद ही जॉब मिल जाएगा। या फिर मैं तुमको बोलूंगा यहाँ पे जॉब है, अप्लाई करो, तुमको अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ, बट अभी उसके साथ तुमको रिपोर्ट्स चाहिए। यू वांट रिपोर्ट्स, यू वांट मॉडल्स विथ यू, बिना उसके तो CV सिलेक्ट नहीं होगा, ये याद रखो। Excuse ओके me. गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू यू सर। गाइस, थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन। थैंक यू।